we need two definitions. One is T-norm, which is nothing but the intersection. Similarly, we need another definition, which is T-conorm, which is nothing but the union. So a function T from 0, 1 square to 0, 1 is called a triangular norm or T-norm if it satisfies the following conditions. First is the boundary condition, which is nothing but Tx1 is equal to x. And second condition is commutativity. Third is the associativity, and fourth one is the monotonicity. So these are the four essential conditions required to form a T-norm. Similarly, T-conorm again satisfying these four properties, again a function from 0, 1 cross 0, 1 to 0, 1, and again satisfying the boundary condition, commutativity, associativity, and monotonicity. Here the difference is in boundary condition. You can see in first in triangular norm, boundary condition says that Tx1 is equal to x, because this is the intersection. Intersection means the minimum one, and we know that x is laying in between 0 and 1. So minimum will occur from x. However, in case of union, ux0, minimum, here this is representing the union. So union means generally maximum. Maximum, since x and 0, if you are taking the maximum, so obviously maximum will come from x. So that's why this is the condition, and the rest of the conditions are almost same. So this is T-norm and T-conorm, and their generalized version is this Archimedean T-norm and T-conorm. So any T-norm and T-conorm are referred to as ATU. ATU means Archimedean T-norm and T-conorm if they are continuous functions and they meet the requirements that Txx is less than x and Uxx should be greater than x. So this is the requirement. ATUs are considered to be strictly Archimedean if they keep increasing strictly for every x and y in 0 to 1. Strictly Archimedean T-norms basically are very useful if you are having alternatives at the same level, then you are not able to classify these or rank them. But if their values are little bit small or larger in comparison, if you are comparing their values, and they are can be easily see that कि कोई value थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी है, then you can easily rank these alternative based on their values. So ये जो bifurcation है, this can be done easily by strictly using a strictly Archimedean T-norm. So now to form this T-norm and T-conorm, we generally have different generators. So additive generators here, G, this is the additive generator for T-norm, and the additive generator in the second definition we are using H, which is useful in T-conorm. So what is additive generator? An Archimedean T-norm can be represented by its additive generator G, which is a strictly decreasing function using the expression Txy is nothing but G inverse of Gx plus Gy, where G is from 0, 1 to 0 infinite, and G, the condition is that G1 should be 0. Similarly, if you are using additive generator H, then an Archimedean T-conorm U can be generated through its additive generator H, which is a strictly increasing function using the expression Uxy is equal to H inverse Hx plus Hy, where H01, H is a function from 0, 1 to 0 infinite, and the condition is that H0 should be 0. So these are the two conditions. Now, based on these generators, we can generate different types of T-norms and T-conorms. Here I am listing only 4 T-norms and T-conorms. First one is the algebraic, and the expression is given by Txy is equal to xy, and its additive generator is minus log t, denoted by gt, and in the last column we have denoted its inverse, e raised to the power minus t. Similarly, we can generate Einstein, Hamacher, and Frank T-norms. In the second table, you can see their T-conorms. Again, algebraic, Einstein, and Hamacher. Their additive generators are also represented here, minus log. For example, in algebraic case, the additive generator is minus log 1 minus t, and its inverse is given by 1 minus e raised to the power minus t. Using this combination, you can generate this algebraic expression Uxy is equal to x plus y minus xy. Similarly, you can use Einstein, Hamacher, and Frank by using their additive generators. Now, using these T-norm and T-conorm, you can generate the arithmetic operation. Generally, in MCDM, we need 4 types of arithmetic operations. So suppose we are having 3 numbers, alpha 1,
mu alpha, which is nothing but mu alpha 1 and mu alpha 1 2. Second intrinsic fuzzy number is alpha 2 with membership grade mu alpha 2 and mu alpha 2. And third one is alpha with membership grade mu alpha and mu alpha. So we are having these three numbers, and now using these three numbers, we can generate these four arithmetic operations. So first arithmetic operation is the sum. Alpha 1 plus alpha 2 is nothing but is a two tuple. So first quantity is evaluated with the help of T conorm, which is U mu A alpha and mu alpha 2. And the second quantity can be evaluated with the help of T norm, T mu alpha 2. If you use the previous expression, this T and U, then generally this is nothing but H inverse of H mu alpha plus H mu alpha 2. And similarly, T can be replaced by G inverse, G of mu alpha 1 plus G mu alpha 2. Similarly, we can find out the product alpha 1 into alpha 2. So here this is equals to T mu alpha 1 mu alpha 2 and U mu alpha 1 mu alpha 2. Again, we can use the same definitions and we can replace these T and U in terms of their additive generators. Third is the scalar product. Suppose alpha is a scalar quantity which is multiplied by this alpha, then we are getting this expression. And the last one is the scalar power, alpha to the power lambda. Then again we can use this expression. So these are the four essential arithmetic operations which will be used to find out to generate the arithmetic operations. Now based on your additive and generators, you can this list you can use for example, if you want to generate algebraic operation, so you have to use their generators, and then you can have the algebraic operations. For example, here I have listed this for an example. Here I am generating the algebraic operational laws. So for that we need gt is equal to minus log t, its inverse, which is e raised to the power minus t. Then additive inverse for conorm is ht, which is minus log 1 minus t, and its additive inverse is h inverse t is equal to 1 minus e raised to the power minus t. If we substitute these values in these expressions, then generally we will get these results. So these are the nothing but the algebraic operations. And this gt, g inverse, ht and h inverse you can find out in this table. So similarly, you can use for Einstein, Hamacher and Frank and generate the associated arithmetic operations. Now, what is an aggregation function? Because the second component is aggregation function. So then an aggregation function is a function of n greater than 1 arguments that maps the n-dimensional unit cube onto the unit interval, which is given by this f from 0, 1 to power n with to 0, 1, with the properties that these are the two properties. First is f, when you substitute all the values as 0, 0, 0, then the aggregation function should reply with 0. Similarly, if you replace all the values with 1, 1, 1, then the aggregation function should give 1. And second is the monotonicity property, that x is less than equal to y implies f of x less than equal to f of y for every xy in 0 to 1. So this is the essential property which should be satisfied by a certain aggregation function. We are having this basically in this talk, we will use weighted aggregation and weighted geometric. So I am listing here what is weighted aggregation and weighted geometric aggregation operator. So suppose we are having n quantities alpha i's with their membership grade and non-membership grades, and the associated weights are w, which is nothing but w1, wn, and since they are the weights, so certain conditions are satisfied by these weights. The first condition is that each weight should be greater than equal to 0 and the sum of all these weights should be 1. Then we can generate ATU based intrinsic fuzzy weighted averaging and weighted geometric operators. So the first expression is for weighted average, which is nothing but the sum of wi into alpha i's. So when you use the previous expression, for example, these you can generate either algebraic, Einstein, Hamacher or Frank type aggregation operator. So like that. So here I'm giving only the general expression, which is when you simplify, you will get this expression. Similarly, in this slide, I am showing that how you can get the weighted geometric aggregation operators for these n quantities. Now, the important feature, if you have seen my previous slide, we are having 4 difficulties.
The second difficulty is DM's criteria weight evaluation. So here I have already shown you certain kind of the approaches you can use to find out the weights. One is optimization model. So here I am using the maximizing deviation method to find out the weight of criteria, and this is due to this maximizing deviation method, which is an optimization model based method. So here my aim is to find out the criteria weights with the help of maximizing deviation method. So in order to choose the best alternative in any MCDM problem, the weighting information of the criteria is either partially or fully unknown. Because if you are having certain problem and you are collecting the information, that may be either fully 100% known, or sometimes you are having some kind of part is not known to you. That means that is referred as partially known information. So how to resolve this kind of problem using this partially or fully unknown problem, and how to find out the weights of the criteria or DMs, you can use maximizing deviation method. So it is essential to evaluate the criteria weights before arriving at a final selection, because this is very important to find out the criteria weights. So Wang in 1998 proposed this maximizing deviation method to evaluate the criteria weights. The advantage, what is the advantage of this method? The advantage of this method is that it uses the original decision matrices provided by the experts. No additional information is required to find out the DMs or criteria weights, because this use only the information provided by the decision maker. It uses linear and non-linear optimization models for the situations when criteria weighting information is either partially or fully unknown. If the information is partially known, then generally we are having linear programming model. And if the information is fully unknown, then generally we use non-linear programming model. And then to solve this type of linear or non-linear programming model, either you can use genetic algorithm, you can use Lingo, you can use your MATLAB, Python, etc. So you can use those techniques to find. But the first part is how to formulate the problem. So that's why I'm giving some overview of maximizing deviation method. So suppose in a given decision making problem, we are having m alternatives denoted by A1, A2, Am, with n number of criteria denoted by C1, C2, Cn, and suppose their weights are nothing but W1, W2, Wn, and since they are the weights, so obviously they will satisfy these two conditions, that each weight should be within 0 to 1 and their sum should be 1. Now, here I am denoting the experts by D1, D2, DS. Suppose I am assuming that we are having S number of experts with us, and again to give them weight, because depending upon their qualification, we can give them weight. For example, suppose one expert is a PhD holder, so we will give more preference to them. Suppose second decision maker is an engineer, so we can give different weight to them. So that's why weightage is also required related to the decision maker. So here the weights are denoted by tau 1, tau 2, tau s. Again, they are weights, so they are satisfying the same type of condition, that the weights is within 0 to 1 and their sum will be 1. Now, each decision maker will provide certain information in terms of matrix. Here row represents the alternatives and the column represents the criteria. So this meeting is being recorded. Rth decision maker provide an information in terms of matrix denoted by this D with superscript R. Here superscript represents the decision maker, Rth decision maker, and the entries are Aij. Here AI represents the row, that means alternative, and J represents the column, that means the criteria. And here AIJR is nothing but in terms of the membership and non-membership grades, because I am using intrinsic fuzzy number here. If suppose you are using Pythagorean fuzzy number, they will be Pythagorean fuzzy number. If you are using picture fuzzy number, they will be picture fuzzy numbers, and so on. So we are having this kind of information, and now using this information, the aim is to find out the decision maker weight. Criteria weight. So to find out the criteria weight, first we will find out the deviation. So what is that deviation? The degree of deviation between each alternative is given by this. So here we will find out the deviation Dijr, which is nothing but the summation of small d Aij, Atj with multiply by the weight Wj. Here I am taking the entries related to the jth criteria, and the weight is Wj, and the associated deviation is calculated by the difference
between the entries in the jth column. Jth column में जितनी भी entries होंगी उनके pair wise हम लोग difference calculate करते रहेंगे, and that difference is denoted by this d aij atj. So here this difference can be calculated with the help of either Hamming distance, either you can use Euclidean distance. So herein I am using only the Hamming distance because this is the most simplest one. So dAij is given by 1 upon 2, the difference between mu aij mu tj, and since this is the distance, so that's why I'm here we are using the magnitude plus the difference between their non-membership rates. So take their sum and then by 2. So this is the average of these two. Then the total difference is deviation is calculated because for each column you are getting this entry D, capital Dij. Then you add all the entries and ultimately you will get the total deviation, which is djw, last equation, djw is equals to summation dijrw, and when you expand it then you are getting this double summation daij atj multiplied by wj. So this is the, now to formulate the either non-linear optimization model or the linear programming model, first you have to identify the ordering criteria. Because to formulate, generally we are using linear programming model, that means partially known information. Then we need this ordering criteria, which is this is introduced by Venn itself in 1998. So he used basically this 5 ordering principle. First one is the weak ordering. Weak ordering because you can see that Wi is greater than equal to Wj. Here we are ordering basically the ith criteria with weight Wi and jth criteria with weight Wj. So if their weights Wi and Wj, they are satisfying this equation. Wi is greater than equal to Wj. So you are not getting very much information in clear sense because equality, this is not strict inequality. This is less than equal to type. Sorry, greater than equal to type. So that's why weak ordering is this. Similarly, in the second, we are having a strict ordering, and you can see that here Wi minus Wj is greater than equal to delta I, but delta itself is greater than 0. That's why we are having strict inequality here. That's why this is strict ordering. In the third one, an ordering with multiples. Sometimes we are having weights which are multiple to each other. So this is the third one. And the last one is an ordering of differences. Wi minus Wj is greater than equal to Wu minus Wa, where I, J, U, and V, they are the basically the criteria. Ith criteria, jth criteria, uth criteria, vth criteria, and so on. Now, if your information is partially unknown, then we generally have this linear programming model. Here the objective function is nothing but the summation from R from 1 to S. Here R from 1 to S is nothing but associated with the decision makers, and which is multiplied by the weights tau R, because tau R is the weight associated with the decision maker, multiplied by the total deviation. Total deviation summation j from 1 to n djr, subjected to these 5 type of ordering criteria which we have already discussed herein. So these are listed as the constraints here. So this will ultimately form the linear programming model. Similarly, if the information is fully unknown, then generally we are having same objective function. You can see objective function is same. However, in place of the criteria, because we don't know the criteria, so that's why we don't have any information in terms of the constraints. That's why here to resolve this problem, we are having simply constraints like Wj should be greater than equal to 0 and Wj square is equal to 1. This is the criteria. So this is the nonlinear programming model, and you can resolve this problem using Lagrange function. So first we will combine these restrictions, that means the associated with the constraint and objective function in a single function, which is known as Lagrangian function. And to form this Lagrangian function, we need a parameter known as Lagrange multiplier, denoted by this lambda. So first part of this function is the objective function plus lambda by 4 multiplied by this constraint. So ultimately we will have this Lagrange function. And then if you are aware then how to solve the problem, so just partially differentiate this Lagrange function with the help of with respect to this Wj, that means weight, and this Lagrange multiplier lambda. Solve these two equations and ultimately you will get the required weights Wj star. So this is the Wj star, and since these Wj star is not
normalized. That means there's some may be different from one. However, the restriction is that there some should be one. So the essential thing is that you should normalize these weights. So this normalization is done herein, and we are getting the normalized weight Wj. And now if you will find out the sum of these Wj's, then generally this is equal to 1. This normalization is very essential. So now we will use all this information to construct our approach, which is ATU based. ATU means Archimedean T-norm and T-norm based intuinistic fuzzy pass method. Pass method means weighted aggregated sum product assessment method for unknown criteria weighting information. So first step is first formulate the problem for which you need experts, their point of views, that means the information provided by these experts, and alternatives and criteria. This is the essential information required to solve any kind of problem. So suppose we are having S experts denoted by D1, D2, DS with their weights tau1, tau2, tau s and satisfying this condition. Alternatives, we are having M alternatives, say A1, A2, AM, and N criteria C1, C2, Cn with weights W1, W2, Wn. Then each expert will provide the information in terms of these matrices. So this is the information provided by the RF expert. So this is the second step. We collect the information from each expert and put it in a matrix form. Then to assemble all these information, we need experts weight. Generally, the expert weights are provided in terms of language, linguistic form. For example, in table, you can see that if an expert is extremely qualified, then generally we will give the weight like 1 and 0. That means membership grade is 1 and non-membership grade is 0. Similarly, if expert is very qualified, then generally we give mu as 0.9 and 0.05. You can see these are 7 in numbers. In table, you can see 7 rows are there. So that means we are using 7 scale criteria. In literature, we are having 9 scale formula, 7, 5, etc. So lots of scales are, and these are the standard ones. So here I am using the 7 scale standard. So if an information is related to a decision maker is in terms of mu and nu, you can find the associative weight using this formula, which is nothing but which is given by the Boran. Boran gave this formula to defuzify this value. So tau r is basically the weight. So we can use this, and then finally we will get the weight of RF expert. Once we are getting the weight of RF expert, then we will assemble those information, that means this type of matrices along with these weights with the help of an aggregation operator. Suppose here I am using the weighted average, then ultimately we will get the information in a single matrix denoted by this table. So ultimately all the matrices are combined in a single matrix, and now we will try to formulate, because the essential thing is the weight of the criteria. Now to formulate to find the criteria weight, we can use the maximizing deviation method, which we have already discussed. So we are having two types of cases: either information is partially unknown and either information is fully unknown. And to find out this weight, we will use these matrices. These matrices means the matrices provided by the experts, जो उन्होंने originally provide किया था उसी का use करेंगे. So we will use those information. So उनका यूज करेंगे and we will find out the weights, और वो मैंने बताया है maximizing deviation में how to find out the weights. So once you are getting the weight, अब आपके पास weights हैं, you are having the weights, you are having this aggregated matrix, then ultimately you can construct, you can find out you can rank the alternatives. So ultimately we will apply this Vaspas method herein at this step. To apply the Vaspas method, the essential thing is you first normalize the criteria, because some criteria are benefit type, some criteria are cost type. So first step is normalization process. Then in the second step, we will assemble all these information. So here we will calculate the performance value for each alternative. So this is denoted by Pi is equal to alpha summation of Bij Wj, which is basically, you can see that the arithmetic mean plus the weight 1 minus of alpha multiply the geometric aggregation operator. So basically this is nothing but the weighted sum of weighted average and weighted geometric. So Vaspas method is nothing but the combination of weighted average and weighted geometric by giving the weight alpha. तो जितना आप weight देंगे उतना आप
कर सकते हैं. Either you can give full weight to the average by putting alpha is equal to 1, तो आपका geometric वाला part resolve हो खत्म हो जाएगा. Similarly, you can full weight to the geometric. So depending upon your choice, alpha आप vary कर सकते हैं. So now in the last, the application part, here I am using HCW healthcare waste disposal technique selection. So this problem is originally discussed by Mishra in 2020, and the area of their study was Himachal. In their study, a survey was conducted in 6 hospitals in Himachal Pradesh from September 2018 to December 2018 to analyze the best healthcare waste disposal method among 4 possible alternatives, which are incineration, microwave, steam sterilization, and landfill disposal. So these are the 4 methods to dispose of the healthcare waste. Generally, healthcare waste is from hospitals. So a questionnaire was prepared by them, and to answer the question, they were provided with linguistic scales, which I have already shown in the table. So for rating alternatives concerning each criteria and criteria weights. So this is the problem. So this is the weights associated with the alternatives. तो एक टेबल मैंने पहले दिखाई है आपको फॉर दिस एक्सपर्ट्स के लिए, उनके वेट के लिए, एंड दिस इज फॉर अल्टरनेटिव्स को फॉर्म करने के लिए, यानी वो जो आरएथ एक्सपर्ट्स देंगे उनको फॉर्म करने के लिए. सो वी कैन यूज दिस. एंड सो फर्स्ट स्टेप इज expert committee formulation. So they constituted a 5 experts committee denoted by D1, D2, D3, D4, D5 with weights tau 1, tau 2, tau 5. In this committee, they have waste disposal specialist, environmental engineer, professor of industrial engineering, and 2 experts from healthcare waste management. So ultimately, they analyzed 4 methods: H1, H2, H3, H4, that means incineration, steam sterilization, microwave, and landfill disposal. And they have used 6 criteria. C1 is the first criteria, which is net cost per ton. C2 is the second criteria, waste residual. Third one is release with health effects. Fourth one is the reliability. Fifth one is the treatment effectiveness. And C6 is the public acceptance. So these are the 6 criteria. And the experts, these 5 experts provided their matrices. So you can see that here the D1 represents the matrix provided by the first expert. Here row is nothing but the alternatives H1, H2, H3, H4, and the column represents the criteria C1, C2, C3, C4, C5, and C6. Similarly, second expert provide the information, third expert provide the D3, fourth expert provide the D4, and the fifth expert provide the D5 matrices. And this information, this GEP, the codes, linguistic codes can be seen here in this table. You can easily decode these. Once you are getting this, then the next thing is the decision makers weights. So for this, we will use this table. We have already shown this table, and the weights are herein. You can see in this table, the first row is linguistic term. The weight of the first expert is Q. Similarly, the weight of the second expert is Q. The third one is VQ. The fourth one is VQ, and the first one is VVQ. So based on this, we will find out their intrinsic fuzzy value based on that table, and then find out their crisp weight. Crisp weight is evaluated based on this formula. You can use this formula to find out the crisp weights. So once you are getting the crisp weight, now these matrices along with these weights are merged in a single matrix. So ultimately, you can see herein we have used these. The information is in this form because here I am having 4 tables. Suppose you are using algebraic arithmetic operations, you will get the first table. If you are using Einstein type of operations, you are getting second. Similarly, for amateur, third one. For Frank, we are having 4th table. So now the next aim is to find out the weight of the criteria. So if the information is partially unknown, that means then we can have this type of linear programming model. Here constraints are basically the information provided by the experts related to the weight. So we have used that information and formulate the problem. So this is the problem. If you solve this problem with the help of genetic algorithm, MATLAB, then you will get the weights. And weights are given here in the last. You can see the weights is nothing but 0.20, 0.05, 0.30, 0.05, 0.10, 0.30. So these are the associative weights. Similarly,
If you are having information which is partially fully unknown, then we are having a non-linear programming model. Then again, you can use your MATLAB and other software or genetic algorithm. Then you can solve the problem. You can formulate the problem and then solve the problem with the help of. So this is the solution. Now, if you are using partially unknown, then you can again use VASPAS method to rank the alternatives. So the first step is obviously the normalization process, for which you need the type of the criteria. Here, the C1, C2, C3 are the cost criteria, while the C4, C5, and C6 are the benefit criteria. So if, for example, C1 is the cost criteria, so look at the last table is this C1. So here we will interchange the membership with non-membership grade to उनको एक ही फ्रेम में लाने के लिए. Similarly, तो हमें हमें ये वाला टेबल मिलेगा. You can see the columns related to C1. When we interchange the membership with non-membership, we will get this C1 column. Similarly for C2 and C3. जबकि C4, C5, C6 they are already benefit type criteria, so we not need to change these. So we will retain as it is. So this is the ultimate, and then so this is the normalization process. Then we will rank the alternatives. So rank the alternatives के लिए हमारे पास दो तीन थी. Either information is fully unknown or partially unknown. If fully unknown, then we will use this. Partially unknown, then we will use these weights for the criteria. And if the information is fully unknown, then we will use these weights. So ultimately, for case one, when the information is partially known, and we will combine all this information in a single matrix, then we are getting these PI values associated with the four alternatives. Again, we are having since four options. Either we are using algebraic, Einstein, Hamacher, or Frank type of operation. So we are getting different values of PIs. Based on this, there we are getting the score values, and then rank these score values. And then you can see that the largest values are associated with H2. So that's why H2 is the best alternative. Similarly, if you are using fully unknown information, then again you are using the weights associated with this given in this slide, and then again combine all this information based on your choice of algebraic, Einstein, Hamacher, and Frank type of aggregation operators. Then again you evaluate the PI values and then their scores and rank the alternatives. And in this category, you can see that we are getting the H4 as the best alternative. So depending upon the value, in either partially or fully unknown, we are having different best options. In first case, we are having H2 as the best option, and in the second case, we are having H4 as the best option. So information पे भी depend करता है हमारा decision. So sensitivity analysis is another kind, because whatever we have achieved, whether that is consistent or not, depending on. So generally in MCDM we will use two type of strategy. One is the sensitivity analysis, and another one is the comparative analysis. In sensitivity analysis, we vary the parameters. Since in this analysis we are using Archimedean t-norm based arithmetic operations. So in this Archimedean t-norm based approach and VASPAS method also. So that's in Archimedean, we are using the parameter gamma, and in VASPAS method, we are using the parameter alpha. That's why we are having two parameters, alpha and gamma. Based on their variation, we can have three type of cases. First case, when we vary alpha and fixing the gamma parameter. In the second phase, if we vary gamma and fix the alpha, and in the third category, we will be both vary alpha as well as gamma. So if we vary alpha and fix the gamma, then we will have this kind of results. Similarly, if we vary alpha and fix our gamma, then we have this type of results associated with the Archimedean t-norms. And if this slide is associated with the fully unknown results, and this result is for partially unknown information. In this slide, we have shown the result when both the parameters are varied. That means alpha as well as gamma. And you can see that in most of these slides, the green surface is over. That means green surface is associated with the H1. So this is basically the results. You can analyze the result, the consistency of the method. And next is the comparative analysis. In comparison, we have compared the result in three categories. First category is denoted by the first table, upper part. Here, the results are shown for those papers in which this same problem is solved by the different methods. For example, fuzzy topsis method is used by Dorson in 2011.
Similarly, Drusen again applies fuzzy Topsis method with different approach. Then again we are getting the result. Liu in 2013 saw the same problem with fuzzy Vickers method, and Mishra et al. In 2020 used intuitive fuzzy IDAS method. So same results are quoted here. In the second category, I am using partially unknown information, weights which we have already used, because if you are comparing, then weight should be same. Otherwise, if I am using different weight, the different method is using different weight, so results will be different. So what is the need? There is no need to compare this type of strategy. So here I am using different methods already listed herein, and we will comparing these results with our results. Similarly, the third one, we are using fully unknown information with the same category which we have used in the second table, and then again compare the results. And most of the time, we have seen that either the best alternative is H2 or best alternative is H4, depending upon the method. So, in overall, we can see that the results which we have achieved herein are more or less very consistent. So, in conclusion, the major finding of this discussed methodology are that it can easily evaluate criteria weights from partially or fully unknown criteria weighting conditions by implementing the maximizing deviation method, for which only decision matrices are required. This is the advantage of this maximizing deviation method. The second conclusion is that the ATU based versatile operational rules are used to fuse the information. Versatile because you are having at least four options. Either you can generate algebraic operation, Einstein-based operation, Hamacher and Frank. So you can generate. So that's why these are very versatile. These operation rules cover a wide range of arithmetic operations generated by different ATUs. I have already discussed this. Then here I have used pass method. So the intrinsic fuzzy pass method is used to select the best healthcare-based treatment alternative. The advantage of the pass method is that it is capable of incorporating the decision makers optimistic and pessimistic attitudes through a parameter alpha. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जब वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रिजल्ट से, और पैसिमिस्टिक में वो बिल्कुल भी हो, तो वो सारा का सारा वेट ज्योमेट्रिक को दे देगा. इन केस ऑफ पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक में वो सारा का सारा वेट अरिथमेटिक ऑपरेशन को दे देगा. सो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्रोमाइज. And these are the references you can see. These are the four references you can use to understand this talk. And I think I have to finish. So thank you for listening me and giving me this time to listen my this research. And again, I'm thankful to the organizers for giving me this opportunity to share my research. Thank you. Thank you, Dr. Kamal, for a nice, rather I can say, for an informative talk that includes the various aspects that how can we define the multi-criteria decision making in various parameters, criteria, alternatives rather than weights, and the different methods you have discussed during this talk. From the participants, if anyone have some query, then please ask. Yes, sir. Myself, Rachan Singh. Yes. Sir, my background is physics, so treat me layman. Now, sir, in T norm and T conform, we put the G1 equal to 0 and S0 is 0. So, what does it mean? Here, understood. I'm showing you this. Yes, I think I will Yes. want to answer of this slide. Here, Right, G is basically, you can see that this G is a decreasing function. Right, sir. G is a decreasing function and the domain is from 0 to 1. So obviously, what is the value? And you can see the range. Range is from 0 to infinite. So since G is a decreasing function, so obviously its maximum value will come at point I 0 got it, sir. and the minimum value will come at point 1. Ah, Similarly, it. H is an increasing function. Right, sir. I got it. I got it out. Thank you, sir. Okay. Now, sir, one more query. Sir, we have used the in next slide lambda alpha function as a multiplier, where Okay, we place the condition. Then we place the condition lambda greater than 0. This lambda is same as Lagrangian multiplier or any random. No. This is the same as Lagrange multiplier. Same. Because Lagrange's multiplier word came later on. So, you can easily find out this literature in various books in operations research. This is very frequently used technique. Right, sir.
Thank you, sir. In physiology, this lecture is very exact, completed in exactly 1 hour Yeah. with no standard deviation. Thank you, Thank you, sir. thank you, thank you. Okay. One more question. Yes, yes, sir. I have First, one query. before asking question, you have to introduce yourself. Then Okay. Okay. Good morning, sir. So my name is Pratibha and I'm for BJR campus body. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने अभी अपनी टॉक में ये डिस्कस किया कि फजी नंबर्स के काफी एक्सटेंशंस आए हैं, तो अगर हम अभी इंट्यूनिस्टिक फजी नंबर पे काम कर रहे हैं तो क्या वर्थ इट है, क्योंकि उसके जबकि आप कह रहे हैं कि उसके काफी जो एक्सटेंशंस हैं वो आ गए हैं. क्या ऐसा है कि एक्सटेंशन आते रहेंगे और आ रहे हैं, लेकिन आप अपने अगर कोड से स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं तो अच्छा है. फॉर एग्जांपल पहले फजी सेट आया, फिर उसका एक्सटेंशन हुआ आईएफएस, फिर तो ये एक्सटेंशन होते रहेंगे, रिसर्च में ये सब चलता रहता है. तो लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज है वो इंटरनिस्टिक फजी सेट ही है. अगर आप इंटरनिस्टिक फजी सेट पे काम करते हैं तो आपके पेपर के पब्लिश होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है. आप जैसे जैसे एक्सटेंशन यूज करते हैं तो आप बहुत बेसिकली बहुत ज्यादा क्योंकि कुछ चीजें पॉपुलर हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई हैं, और दे आर बेसिकली द प्रॉब्लम ओरिएंटेड है. हर जगह आप पाइथागोरन नहीं लगा सकते, लेकिन इंटरनिस्टिक जैसा है आप मैक्सिमम जगह लगा सकते हो. सो अगर आप आईएफएस पे काम करते हो तो डू समथिंग सम वर्क ऑन दैट और फिर रियलाइज करो कि हाँ अब मुझे उसके एक्सटेंशन पे जाना चाहिए. धीरे धीरे आप अपने आइडिया को एक्सटेंड करें, कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बनस्पति आप स्टार्टिंग में ही बहुत एक्सटेंशन पे काम करने लग जाओ तो कई बार जैसे पिक्चर फजी सेट पे पेपर पब्लिश करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन अगर आप आईएफएस पे काम करते हो तो आसानी से हो जाता है. उतना मतलब मुश्किल, अगर आपके काम में दम है तो हो जाएगा. तो आई सजेस्ट कि आप आईएफएस अगर आप कर रहे हैं तो आईएफएस पे बने रहें, काम करें, फिर धीरे धीरे पाइथागोरन पे जाएं, फिर क्यूरन पे जाएं, फिर फॉर्माटियन पे जाएं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इंक्रीज करें. क्योंकि फिर प्रॉब्लम भी आपको उसी तरह की चाहिए होगी. ऐसा नहीं कि आप जो है कोई भी प्रॉब्लम उठाएंगे और जबरदस्ती उसमें लगाना चाहेंगे, ऐसा ना करें. तो अच्छा पेपर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए स्लोली स्लोली इंक्रीज करें, आपका काम 100% पब्लिश हुआ. Okay, thank you, sir. any other query? Okay, sir, I'm asking one query to Dr. Komal. I am Dr. Sandeep, Dr. Komal. Yes sir, thank you Dr. Saab. जी, जी. First, I will comment for your nice and mesmerizing talk. Definitely, participants will get the benefit this informative and valuable talk. And as you said in the initial of your talk, you can use various aggregation operators for getting the collective information, and the choosing of any aggregation operator is depending on the choice or the need of the problem. So I want to know that when we are selecting any aggregation operator, then in what way we select an aggregation operator? This aggregation operator is the best aggregation operator. Once second, if we are generating or we are producing an aggregation operator, then what should be the key factors for making an aggregation operator to the best aggregation operator? So this is my first query, and the second one is that as you said in your talk, various extensions of the fuzzy set theory have been established so far in the literature. So when we are trying to prepare or to collect the data for an application, and generally reviewers are generally reviewers of the papers are said in the comments that अनम्यूट कर सर. एसआर वाले को अनम्यूट करना, एसआर वाले को अनम्यूट कर. हाँ ये तो संदीप, अरे अनम्यूट कर उसे, एसआर वाले को. can we say that this data is the primary, because
data is available on the data collection in the crisp sense. So how can we say this is the primary data? Please. So I think you are overall having two different questions. One is Yes, related yes, to the yes, aggregation operator, and another one is related to the primary or secondary data, yes. I think. So as you can see that in this slide, I think you can see this slide. Here we are having different aggregation operators. Starting from averaging mean, then we are having geometric mean, then we have Bonferroni mean. So different aggregation operators are available in the literature. As far as the best is concerned, this is very difficult to say because in some problem averaging mean gives good result. I'm not saying the best result because each problem can be analyzed with the help of different aggregation operators, and nobody can say that these results are better. In decision making, this is the drawback. You cannot say that particular technique or particular aggregation operator gives you the best result. No. We are having basically an idea. We are getting the results in approximate form. That's why we cannot say that this is the exact or this is the best result, because ultimately we don't have any final result. If we are having final result, then we can compare the result with ours, and then we can say that okay, these results are better. And then since we are only predicting, we are assessing the result on our analysis basis. So we cannot say that this aggregation operator is good or bad. That's why we are doing this comparative analysis. The main purpose of comparison is that we are trying to reach the results which are already either available in literature, or we are trying to find out the results with the help of the existing methods. So we cannot say that this aggregation operator is good or bad. No, you can use any type of aggregation operator and compare your result with the existing operator. If your results are very much close to the existing result, then you can say that okay, these results are good or bad. So this is basically the result. As far as the second is concerned, sometimes we are trying to find out, we are trying to analyze a new problem. Then we will go to the field, extract the data with the help of the experts, then formulate. So for that, generally we prepare a questionnaire, we will analyze the result depending upon the problem. So sometimes we are getting data from the exact field with the help of the experts. So depending upon the problem, if you are analyzing certain type of problem, you are going to the field for example, into a village, you are collecting some information, then that information is a very big type of information. So depending upon the problem. So that problem, if you are directly in contrast, if you are collecting the information directly from the field, then you can use primary data. You can refer that as a primary data. If you are using the already published papers or information already which is available in the literature, then really we refer that this is the secondary data. So in general, to extract the primary data sometimes very difficult for us because we are not a scientific, we are not industry background, we are not having. So that's why we generally collaborate with those, and they will provide the information which may be primary. Or recently we have published a paper in which primary data is used, and that information is provided by the expert which is in Turkey. They provided the information, and then that information is based on the renewable energy. So we have compared. So that's why this is the problem. So if you are having expert with you, which provide you the information in primary form, that very good. Then otherwise you can use the secondary data. Okay, okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. थैंक यू डॉक्टर कोमल। देखिए आप लोगों ने, हाँ बोलिए, वन मोर क्वेरी इज देयर। Hello. Yes, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Myself is Dr. Kamesh Kumar from Kisan PG College, Hapod, Ji. Simbhavli, Hapod. Ji. Sir, I want to ask you that you have presented different types of generalization of the intrusionistic fuzzy sets. As I read intrusionistic, we can give an example of intrusionistic fuzzy set. That very simple example, that number of votes in favor of the candidate and number of votes against the candidate, and there are some votes which goes to nota. Nota. That means Yes. abstention Yes. part.
Yes, yes. That means water is confused. Water is confused. Can you give some real example for these extensions which you have discussed, like Pythagorean fuzzy set, neutosophic fuzzy set, and picture fuzzy set, other than this example? You can easily find out the examples in literature because at this particular moment I can say I cannot give you the particular examples which I have because in that at that time I have because picture fuzzy set. What is the main advantage of picture fuzzy set? I used to explain that with the example. And I Yeah. have given the Lok Sabha example where the some of the leaders they are not in preferable of certain bill. They are some of them are in against them, some of them are not participating. So Yeah. that type of situation can be easily handled by picture fuzzy set. But sometimes we are having some confidence. Okay, we are trying to give in favor. Sometimes we are not in favor. So that is membership and non-membership rate. And sometimes they are confused. They are confused. But that confusion is deal with the hesitation factor. So this can be done with the help of this intuinistic fuzzy set. As far as the fuzzy set is concerned, fuzzy set generally we are having confidence level. We are not dealing with not confidence. So jitna confidence hoga utna we are trying to give this the weightage to the membership rate. So this is the broad difference, and you can see the examples in number of papers. They are already specified that okay, if this situation can be easily handled with membership fuzzy set, this can be easily handled with the intrinsic fuzzy set. So that's why you can easily see literature, and I'm giving you this my email ID. You can, if you have any query, then you can contact me through email, and I will provide you the examples. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. The last question of this session. बोलिए बोलो. Hello, हाँ. good morning, sir. Yes. My name is Parveen Kumar. I am research scholar student. Sir, my question is that, as we see that type 2 fuzzy set is in three dimension. Also, I am seeing that intuitionistic fuzzy set also in 3 dimension. Am I right? Yes, yes. Sir, but we calculate AG type 2 intuitionistic fuzzy set by putting the value of x. But it is not AG for me. When we calculate type 2 fuzzy set, when I primary membership function, I calculate easily. But membership की बात करते हैं, वो एजी कैलकुलेट नहीं हो पाती. जो हमारा उसकी जो मेंबरशिप फंक्शन जो होता है टाइप 2 फजी सेट में, वो एक फजी सेट हो जाता है. वो एजी कैलकुलेट नहीं होता है. और इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट में क्या है, वो एजी कैलकुलेट हो जाता है. मेंबरशिप वैल्यू एंड नॉन मेंबरशिप वैल्यू. सर, कोई एजी मेथड ऐसा जो मैं उसे कैलकुलेट कर लूं और विजुलाइज कर लूं 3D डायमेंशन में टाइप 2 फजी सेट को, जैसे इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट में विजुलाइज कर लेता हूं. यही तो रिसर्च है जो आपने जो कहा कि ये इजी नहीं है थोड़ा फाइंड आउट करना. तो आप इस पे थोड़ा काम करिए, देखिए एग्जिस्टिंग लिटरेचर में क्या क्या मेथड्स हैं, क्या उनकी ड्रॉबैक्स हैं. और फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आई थिंक डिफजिफिकेशन के बारे में आप बोल रहे हो शायद, कि डिफजिफिकेशन कैसे करें. जैसे फजी में इजीली कर लेते हैं, बट टाइप 2 में आपको प्रॉब्लम आ रही है. तो आप, आई थिंक यू शुड गो टू द लिटरेचर एंड फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग मेथड्स, और उसमें आप अप्लाई करके देखो कि उनमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और फिर उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. तो यही आई थिंक एक रिसर्च है, रिसर्चर का काम है कि वो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करे और देखे कि उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को वो असेस करे, और उनमें से अगर कुछ लगता है कि शायद उसके लिए कुछ नया काम निकल के आए जो आप बता रहे हो. थैंक यू डॉक्टर कोमल. थैंक यू सर. देखिए, डॉक्टर कोमल ने जिस तरीके से अपनी जो लेक्चर था उसको रखा, देखिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग कहते हैं कि अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं, कहते हैं अप्लाइड और कहते हैं प्योर. तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. फ्रॉम इफ यू हैव सिंसियरली हर्ड दिस टॉक, देन यू कैन सी ऑब्जर्व कि यहाँ टी नॉर्म, टी को नॉर्म, इन सब की बात हुई. वहां हमने बाउंड्री कंडीशंस भी देखी, मोनोटोनिसिटी की भी बात कर रहे थे हम लोग, बहुत सारी चीजें की बात है. आप प्योर मैथमेटिक्स में जब आप ग्रुप वगैरह वाली सारी थ्योरम्स प्रूव करते हो तो वहां का क्या देखते हो आप, मोनोटोनिसिटी करते हो, ये सब करते हो.
और बाकी हम लोगों ने बात करी थी मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन की, डॉक्टर कोमल ने मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग से शुरुआत करी। तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि देयर इज ए थिन लेयर बिटवीन द प्योर मैथमेटिक्स एंड द अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो डॉक्टर कोमल ने जिस तरीके से लेक्चर रखा है, आई वाज वेरी मच interested in this lecture. This lecture was very informative and very enriching for the knowledge. So I am very thankful to Dr. Komal for giving such a nice talk. Now I invite Dr. Sadhana for a formal vote of thanks to Dr. Komal. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. Good morning to one and all present here. On the behalf of organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. My heart fills with lots of gratitude for our distinguished guest speaker, Dr. Komal, for sparing his invaluable time for us with this commendable talk on the topic Introduction to Multi-Criteria Decision Making with Applications. We are grateful to you for clearing our concepts and enhancing our knowledge on the topics multi-criteria decision-making problems, maximizing deviation approach, uncertainty quantification approaches, intrinsic fuzzy wasp approach, and respective applications in the management of healthcare waste. You have put your best efforts to make this talk unforgettable. Thank you so much, sir. Thank you again, once again, and I'm giving thanks for the organizers for inviting me to deliver my talk. Thank you. Now moving to forward. During the next 30 minutes, we will have an interactive session and we will discuss various issues as someone asked about type 2, type 1, and intuit mistake, Fermatian, Pythagorean, and how can these sets be used by using the meta-heuristic algorithms. As you have some nature-inspired algorithm, someone say कि it is genetic algorithm, butterfly, ant colony optimization, and these are all optimization methods. तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने किसी ने पूछा था कि हम बात करते हैं फजी की, तो फजी में आप लोग जानते हैं क्या है फजी, आप सब लोगों ने पढ़ा अभी जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ठीक है। अब फजी में हम बात करते हैं ग्रेडिंग की, समवन सेज कि प्लीज कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ टॉल पीपल या कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ सनी डेज, so how will you construct? There is problem in constructing such type of sets. But when you say कि you go into the crisp set theory or classical logic, so you easily can कि there is a two valued set 1 and 0. 1 will represent कि the element belongs to the set and 0 represent the element doesn't belongs to the set. But when we come to such type of sets कि where we cannot say the information is incomplete or we say कि the information is uncertain or the information is imprecise, तो how will you construct? तो दिस मीन्स कि आप लोग जब हम ये बात करेंगे कि भी कौन एलिमेंट है और उस एलिमेंट की बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करेंगे, सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, दिस मीन्स कि वी हैव टू डिफाइन ए फंक्शन, दैट फंक्शन विल कवर सच ऑल सच टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो इसके लिए जब फंक्शन की बात आई तो हम लोगों ने क्या किया कि एक मेंबरशिप फंक्शन, वहां तो हमारे पास क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता था क्रिस्प सेट में, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक मेंबरशिप फंक्शन आ गया। अब जब फंक्शन आ गया तो फंक्शन की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शन में भी कंटिन्यूअस और फंक्शन में भी डिस्क्रीट भी हो सकता है, या फंक्शन में भी लीनियर और फंक्शन में भी नॉन लीनियर। तो जो मेंबरशिप फंक्शन की हम बात करते हैं, इसका मतलब वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज रखता है, वो उस एलिमेंट के बारे में सारी बातें हमको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि वो क्या मतलब बताना चाहता है कि हमारे पास लीनियरिटी बन रही है, नॉन लीनियरिटी बन रही है, या क्या चीजें बन रही है। अब ये तो बात आ गई कि हम सारी की सारी बातें अपने फेवरेबल करे जा रहे हैं, बट as someone asking the question ki if there are some voters, some vote, some against, some gives nota, then there are three types of things are there. But before moving to these three type of things, when we are talking about the fuzzy set, so as you know ki there is an interval and there are some certain properties of interval. Interval may be closed, interval may be semi-open, semi-closed, या completely open.
तो वहन हम ये कह रहे हैं कि जब मेरे पास कोई फजी सेट है और उस फजी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कोई फंक्शन यूज किया और उस फंक्शन को मैंने मेंबरशिप फंक्शन कह दिया। अब मेंबरशिप फंक्शन की भाई, जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में भी पीस वाइज कंटिन्यूअस, फंक्शन में भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जब ये फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, तो अगर आपने ये कहा कि मैंने एक वैल्यू ए है एंड अनदर वैल्यू आई हैव बी, between these two values a and b the function is continuous. अब what about the at point a and what about at point b? तो अगर उन दोनों पे भी है तो इसका मतलब आई विल गेट ए क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि उस फंक्शन को मैंने एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर लिया ए और बी में। इसका मतलब इस क्लोज इंटरवल के बहुत सारे क्या हो जाएंगे मेरे पास, सब इंटरवल्स बना लूंगा। जैसा कि आपने रीमैन इंटीग्रेशन पढ़ते हो आप लोग, रीमैन इंटीग्रेशन आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो जो हमारे पास इंटरवल बना लिया और हमने उस मेंबरशिप फंक्शंस को इंटरवल की फॉर्म में देखना शुरू किया, तो मेरे पास क्या हो गया कि अब जो फजी सेट है कि फजी सेट की वैल्यू उस इंटरवल के बीच में आ गई। अब जब इंटरवल के बीच में आ गई तो फजी सेट कैसा बन गया? बताओ, जो लोग फजी की बात कर रहे थे अभी, इंटरवल वैल्यूड फजी सेट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट पजेसेस द वैल्यू बिटवीन द इंटरवल। अब जब इंटरवल के बीच में वैल्यूज आ जाएंगी, तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे टाइप 1 की, अब जैसा इन्होंने कहा टाइप 2, और उधर हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ इंट्यूटनिस्टिक की। इंट्यूटनिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम फेवरेबल की तो बात करते हैं, अनफेवरेबल की बात भी करनी चाहिए। और अगर अनफेवरेबल की बात भी करेंगे, मान लिया आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स 7 या 8 स्टूडेंट किसी बात के फेवर में, कुछ अगेंस्ट में, कुछ शांत बैठे हैं कि हमें तो कुछ कहना ही नहीं। इसका मतलब 3 तरह की बातें आ गई। तो कुछ लोग तो फेवर में जा रहे हैं, कुछ उसके विरोध में जा रहे हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब एज ए मैथमेटिशियन when I will talk about this thing, so I have to construct 3 type of functions. One function for those who are favor, one function for those who are against, and one function for who are not saying anything, neutral. This means कि when जब आपके पास कोई एलिमेंट हुआ, अब उस एलिमेंट, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा था, कि मैं ये कह रहा था कि आपको किसी एक पॉइंट के लिए अपनी वोट कास्ट करनी है, तो उस एक पॉइंट एक्स के लिए मेरे पास 3 तरह की चीजें हैं। कुछ तो उसके लिए फेवर में है, कुछ उसके विरोध में है, और कुछ उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब मुझे 3 तरह के फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। द फंक्शंस आर कॉल्ड, वन इज द मेंबरशिप फंक्शन, अनदर इज द नॉन मेंबरशिप फंक्शन, एंड थर्ड वन इज द हेजिटेशन पार्ट। हेजिटेशन पार्ट मींस कि दे आर हेजिटेटिंग टू से समथिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपके पास 3 चीज हो गई, तो दैट, फिर मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा। तो उस सेट को हम क्या कह रहे हैं, इंट्यूटनिस्टिक फजी सेट कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इंट्यूटनिस्टिक फजी सेट कह रहे हैं, तो अब आपके पास जो इन्होंने की प्लेन की बात, तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम उसी प्लेन में हैं या डिफरेंट प्लेन में चले गए, कि मेरे पास 3 प्लेन है, एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, जेड प्लेन है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल की बात इन्होंने की। तो अगर मैं एक ही, जब मैं इंट्यूटनिस्टिक की बात करता हूं या फजी सेट की बात करता हूं, तो क्या मैं एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं या मैं डबल प्लेन की बात कर रहा हूं? जैसा इन्होंने कहा रिडक्शन की बात की इन्होंने, कि मेरे पास अगर टाइप 2 फजी सेट है तो मैं उसे रिड्यूस करके टाइप 1 में आ जाऊंगा। लेकिन जब मैं इंट्यूटनिस्टिक फजी सेट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब वहां मुझे क्या करना है कि वहां मेरे पास, जब 2 टाइप की, मैंने टाइप 2 फजी सेट की बात की, इसका मतलब 2 प्लेन्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इंट्यूटनिस्टिक फजी सेट में जैसा आपने कहा 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल कैसे हुआ? तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि आपने कहा कि 3 डायमेंशनल है, तो ये 3 डायमेंशनल कैसे हुआ? मेरे पास तो सिंगल एलिमेंट है, उस सिंगल एलिमेंट के लिए मैं 3 तरह की चीजें डिफाइन कर रहा हूं। वन इज द मेंबरशिप फंक्शन, अनदर मेंबर फंक्शन, एंड थर्ड वन इज द हेजिटेशन पार्ट। देन हाउ कैन यू से कि दिस इज द 3 डायमेंशनल सेट? बताओ। है? नहीं, वो तो मैंने कह दिया। मेरे पास एक एलिमेंट लिया, मैंने एक्स लिया, उस एक्स के लिए मैंने 3 चीजें डिफाइन कर दी, उसी के लिए मैंने मेंबरशिप बनाया। कि मतलब आपने कहा कि भाई मैं कोई एक पर्टिकुलर बात रखता हूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर बात के लिए सपोज करो मैंने यही कहा कि स्टॉक की बात की, मैं कहता हूं कि ये टॉक कैसी थी? टॉक तो सिंगल है, उसके लिए कुछ ने कहा जी बहुत अच्छी थी, कुछ ने कहा अच्छी नहीं थी, कुछ ने कहा कुछ शांत बैठे हैं। तो मेरे पास 3 तरह की बातें आ गई, और यही बातें 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे, कम से कम 10 तरह के व्यूज आ जाएं। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इंटरवल वो छोटा होता चला जाएगा, मैं पीस वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करता चला जाऊंगा। वो तो बाद की बात है, हम आगे देखेंगे, उसका तो बात करेंगे अभी।
तो इसमें जो आपने कहा कि ये 3 डायमेंशनल है, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने 3 डायमेंशनल कैसे कह दिया इसे? नहीं, पर्टिकुलर सेम एलिमेंट के लिए आप बात कर रहे हो ना, आप तो एक ही प्लेन में हो। आप जो एलिमेंट ले रहे हो वो तो आप 3 प्लेन में तो अलग अलग नहीं ले रहे ना, ये 3 प्लेन में ले रहे हो। कैसा आप कह रहे हो? या तो आप एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हो, वाई जेड प्लेन में कर रहे हो, जेड एक्स प्लेन में बात कर रहे हो। भाई आप 3 डायमेंशनल कैसे कह सकते हो? और कोई जवाब दो। तो कह रहे हैं क्या ये इनकी बात गलत है? आप जब ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री करते हो, ज्योमेट्री तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं ना ज्योमेट्री। पहले एक्स प्लेन की बात करते हैं, फिर एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, फिर एक्स वाई जेड की बात करते हैं। 3 डायमेंशन जो है बीएससी में आते आते जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब आप एक एलिमेंट एक्स से ले रहे हो, वाई से ले रहे हो, जेड से ले रहे हो, तो इसका मतलब यू हैव टू 3 एलिमेंट्स। नाउ द एलिमेंट इज सेम बट यू हैव 3 फंक्शंस फॉर द सेम एलिमेंट. The element is same in the x plane, only x. That is why the difference between type 2 fuzzy set and the intuitionistic fuzzy set. Now when we move forward to the टाइप 2 फजी सेट्स, टाइप 2 फजी सेट में आपके पास क्या नॉन मेंबरशिप फंक्शन की बात नहीं कर रहे हो आप, वहां पे एक अनदर मेंबरशिप फंक्शन बना रहे हो किसी उसके लिए। और टाइप 2 से तभी आप रिड्यूस करके किस में आते हो? टाइप 1 में आते हो कि अगर आपने एक को 0 कर दिया, वाई को 0 कर दिया, तो आपके पास क्या रह गया? एक्स ही रह गया। आपने एक मेंबरशिप फंक्शन किसके लिए बनाया? एक्स के लिए बनाया। दूसरा एक्स वाई आपने ले लिए, 2 एलिमेंट लिए एक्स वाई प्लेन में आप कह रहे हो, तो एक्स वाई के लिए आपने कोई मेंबरशिप, एक एक्स के लिए म्यू एक्स बना रहे हो, वाई के लिए क्या बना रहे हो? म्यू वाई बना रहे हो। अगर आप वाई को 0 करते हो, दैट मीन्स कि मेंबरशिप फंक्शन भी उसका 0 हो जाएगा एंड इट विल रिड्यूस टू टाइप 1 फजी सेट, दैट इज द फजी सेट। तो हमारे पास फजी सेट्स के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं आगे, पिक्चर सेट, रफ सेट, सॉफ्ट सेट। हम लोगों ने केवल सेट पढ़ा था अभी तक, लेकिन जब हम सेट्स की आगे बात करते हैं तो फजी सेट आएगा। फजी सेट में बहुत सारी चीजें हैं, इंटरवल वैल्यूड फजी सेट हो जाए, ठीक है ना। फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से हमारे पास क्या है? टाइप एन फजी सेट्स हैं, जहां एन डायमेंशनल की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं सेम एलिमेंट्स के लिए बात करता हूं तो इंट्यूटनिस्टिक पर आ जाता हूं। इंट्यूटनिस्टिक में 3 चीजें हैं, मेंबरशिप, नॉन मेंबरशिप, हेजिटेशन पार्ट। इफ आई रिमूव द हेजिटेशन पार्ट देन आई मूव फॉरवर्ड टू द वेग सेट्स. Weak sets is equivalent with the membership and non-membership. But if this intuitionistic fuzzy set satisfies certain conditions, means कि if it is satisfy the Pythagorean theorem, then we call it as Pythagorean fuzzy set. कि म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर क्या हो जाए आपके पास? जो आपके पास पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरन थ्योरम? ठीक है। एंड इफ आई टेक द क्यूब ऑफ दीज मेंबरशिप प्लस नॉन मेंबरशिप, then it becomes Fermatian fuzzy sets. तो जैसे जैसे आपने जो पढ़ा पाइथागोरियन, फर्मेटियन सब चीजें होती हैं, उसी तरीके से एक्सटेंशंस ऑफ फजी सेट्स की बात करते हैं। तो जैसा जो हमारी वर्कशॉप की थीम है, वो पहला है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। 2 तरह की कंप्यूटिंग होती है, वन इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग एज अनदर इज हार्ड कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग मींस कि व्हेन वी हैव द मॉडल्स इज इम्प्रिसाइज मॉडल्स, ठीक है, वी हैव नॉट द सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट मॉडल्स. So to solve such type of models, such type of things, we have to use the soft computing techniques. The soft computing technique means कि you are using the fuzzy logic. You can use the machine learning algorithms. Machine learning algorithm basically there are 4 types of machine learning. One is supervised, unsupervised, semi-supervised, or reinforcement learning. When we talk the supervised learning means कि you need some supervision. Means कि there is a trainer who will train you. This means you need a teacher who will teach you. When we come to the unsupervised learning means कि you have to learn yourself. No one will supervise you. Unsupervised means कि there are some things कि there are some data set. Above the data set you have to learn yourself, and other part will be teach by another supervisor. And when we come to the reinforcement learning means कि you have to force to learn such type of things. For that we use Monte Carlo technique. When we come to the reinforcement learning, you need Q learning. There are 2 type of algorithms. When we come to the supervised learning,
तो देयर आर वाई, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमें मैथमेटिक्स की जरूरत कहाँ है। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट टेक कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग में जो पहली एल्गोरिथम है वो है रिग्रेशन। मींस कि यू मस्ट नो अबाउट रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। दो लाइन होती है ना, आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ते हो, तो रिग्रेशन वाली जो एल्गोरिथम है दैट कम्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पार्ट। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन आपने पढ़ा, तो उस रिग्रेशन को यूज करते हैं कहाँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग यूज करते हैं वहां। आपने बेजियन थ्योरम पढ़ी है, क्या होती है बेजियन थ्योरम की, यू देयर आर, सपोज करो देयर आर टू इवेंट्स and one event has already occurred and you know about the probability of that event. Now you want to know the probability of the event when one event has already occurred. There is a Bayesian theorem, conditional probability. तो there are दो मशीन लर्निंग है, उसकी जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं सब में मैथमेटिक्स यूज होता है, और वो मैथमेटिक्स यूज होता है जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सारी की सारी चीजें वहां ऐसी हैं जो हमें बिना मैथमेटिक्स, जो ग्रेजुएशन तक का मैथमेटिक्स है, बागया हायर वाला जो मैथमेटिक्स है वो तो कॉम्बिनेशन ही है सबका। कि हमने क्या करा, कहीं एलजेब्रा ले लिया, जैसे अभी हम फजी लॉजिक की बात कर रहे थे, फजी लॉजिक में डॉक्टर कोमल ने टी नॉर्म टी को नॉर्म की बात करी, ठीक है। तो वी हैव सम फंक्शंस की हमारे पास क्या है, वहां तो अभी तक हम जो बात करते थे, जो हमारा क्रिस्प सेट थ्योरी है, टोपोलॉजी एल्जेब्रा में जो बात करते हैं कि मोनोटोनिसिटी क्या होगी, या आइडेम्पोटेंसी क्या होगी, सुपर आइडेम्पोटेंसी क्या होगी, या एसोसिएटिविटी कैसे हम चेक करेंगे, या कॉम्यूटेटिविटी कैसे चेक करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ चेक करते हैं तो मेरे पास एक कंडीशन है कि मेरे पास जो डोमेन और जो रेंज होंगी वो दोनों कहाँ होंगे, क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में, ठीक है ना। तो मेरे पास जो भी वैल्यू होंगी वो क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में होती है। तो तीन तरह के एस्पेक्ट हैं, देखिए, एक तो फजी सेट थ्योरी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं आपको, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी, मान लिया हम कहते हैं कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी की हु विल गेट हाईएस्ट मार्क फ्रॉम द इन द क्लास। तो दिस इज पॉसिबिलिटी क्या है, तो दिस इज अगेन ए मैथमेटिकल थ्योरी, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कि आपके पास क्या है, इक्वली लाइकली, कि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट्स की क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो गेट हाईएस्ट मार्क्स गेट करेगा। तो 1/20 कर दोगे आप, हर एक के लिए 1/20, 1/20 सम कर दोगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट when we come to the possibility theory is based on the evidences. Evidences means कि हम उसका पास्ट देखें कि उसने क्या किया है, 10th में क्या था, 11th में क्या था, 12th में क्या था। तो उसके लिए हम उसकी क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, और हर स्टूडेंट की उस ग्रेडिंग के बेस पर हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी। तो व्हेन यू विल ऑब्जर्व, यू सी की पॉसिबिलिटी कैन बी ग्रेटर देन 1, पॉसिबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इस पर अगर आप बड़ा इंटरेस्टिंग, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जा रहे हैं, कंप्यूटर के फील्ड में जा रहे हैं, सोशियोलॉजी में जा रहे हैं, या जिस भी फील्ड में आप देखोगे, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, ये सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक्स मींस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं और मशीन लर्निंग यूज करते हैं। अभी आप लोगों ने बात करते हो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आप बात करते हो आईओएमटी, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स की, आप बात करते हो आईओएचटी, इंटरनेट ऑफ हेल्थ थिंग्स की। अब आप ये कहते हो कि इसमें इंटरनेट कहां से आ गया, कैसे हम कह रहे हैं कंप्यूटर कहां से आ गया। तो जो हमारे पास जो जितनी भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हैं, क्योंकि अगर आप पुरानी थ्योरी जो हार्ड कंप्यूटिंग है, जो हम अब तक आपने अभी जो एक इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं डेरिवेटिव फ्री ऑप्टिमाइजेशन। वी विल नॉट एनी डेरिवेटिव, वी विल नॉट dy by dx। तो डेरिवेटिव फ्री ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज वी आर लीविंग द हार्ड कंप्यूटिंग एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी थोड़ा सा आपको दिखवाते हैं कुछ चीजें। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम जो हम कहते हैं कि जो हमारी नेचर इंस्पायर्ड है, बायो इंस्पायर्ड है, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, और वहां हम फजी कैसे यूज कर सकते हैं। जो हम न्यूरो फजी सिस्टम, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो जो माइंड में है, माइंड में क्या है, न्यूरॉन्स हैं। तो जो वो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या है, करोड़ों की संख्या में है। तो जितने इनपुट मैं दे रहा हूं,
तो आपने कितने इनपुट लिए, किस न्यूरॉन ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उनके क्या कॉम्बिनेशंस बने और क्या आउटपुट निकला। तो इसका मतलब देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज द इनपुट, बिटवीन हिडन लेयर्स हैं जो किसी को पता नहीं चलता और अंदर प्रोसेसिंग होती रहती है, और फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमने जो बात करते हैं हम न्यूरॉन्स में जो होता है वही हम आर्टिफिशियल, उसी के पैरेलल हमने सिस्टम बना दिया। अब उसके लिए आपको क्या करना, फंक्शंस डेवलप करने। फंक्शंस में भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन मीन कि आप एक इनपुट देने के बाद एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं, तो आपके पास जो वेट्स की उन्होंने बात करी डॉक्टर कोमल ने, जो हम वेट्स की बात करते हैं, क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो फंक्शंस की बात करते हैं, विलेज किसको कितना वेट देना है, वो वेट कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी कैलकुलेशन आगे कैसे मूव करेगी, तो इन सब चीजों को हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे हम लोग 11:45 पे। ठीक है, 10 मिनट ये और दिखाने के बाद हेलो हेलो। Meeting is off. Sir, you are getting my voice? My name is Tarun Kumar. Yes. I am here to show you the applications of particle swarm optimization, simulated annealing algorithm, Firefly algorithm in MATLAB. Before starting to show you the applications of these, we are talking about artificial intelligence, and we are in the era of artificial intelligence. So I am taking a basic example you solved in graduation level transportation problem. वहां पे क्या करते थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, आप लोग जानते हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपके पास होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड आपके पास होता है, सबने पढ़ा हुआ है, वैम मेथड होता है आपके पास, सबने पढ़ा हुआ है। क्या करता है वो, अलोकेशंस देता है, एंड दिस इज ए ओनली वन अलोकेशन, दैट इज ए थॉट। किसी का भी था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, केवल एक थॉट, उसने एक लीनियर कॉम्बिनेशन तुम्हें दे दिया। कोस्ट आपके पास पहले से असाइन है, आप अलोकेशन कर रहे हो, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। दैट मीन्स जो C11 तो हमारा, जो हम कोस्ट की बात करते हैं CIJ की, तो उसमें कोस्ट तो हमारा फिक्स है, लेकिन जो अलोकेशंस हैं वो हमारा अननोन है, वो हमारे किससे आते हैं, एल्गोरिदम से। फिर वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो, लीस्ट कोस्ट मेथड हो, वैम मेथड हो, या अदर डेवलप्ड किसी के भी इन रिसर्च में मेथड हो, वो क्या है, किसी का एक थॉट है और एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है, मैनुअल कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये इतने पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही है, वो एक ने बना दिया, दूसरे ने बना दिया, तीसरे ने बना दिया, 10 ने बना दिया, 100 ने बना दिया, मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है उसको यूज करेंगे टू फाइंड आउट द अलोकेशंस, यानी कि जो एक्सआईज हैं, जो हमें वेरिएबल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उनको फाइंड आउट करना है, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। मैनुअल कैलकुलेशंस कितनी करोगे, और अब तो आईआईआई का है, तो जो ये एल्गोरिदम्स हैं ये तो मैनुअल कैलकुलेशंस हैं, इनकी भी मैटलैब में कोडिंग है, लेकिन दिस विल गिव यू ओनली ए वन सॉल्यूशन। पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है। हाउ दिस वर्क, दिस in 1995 Canadian Albert developed the particle swarm optimization. What is the idea behind this to develop this optimization technique? It is based on flock of birds, जो हम birds को देखते हैं कि कैसे वो एक साथ फूड को सर्च करने के लिए चलते हैं। सभी देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो फ्लोक ऑफ बर्ड्स सर्चिंग फॉर फूड, दैट मीन्स दिस इज पार्टिकल इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट, as birds move in starting flock of birds searching for food, तो
there is velocity of every bird and position of every bird. As bird moves, the velocity and initial position changed, and they move towards whether they found the food and stop. And this is the, अब इसमें से ही क्या है, मैथमेटिक्स लिया गया यहाँ से कि जो पार्टिकल इनिशियलाइजेशन है उसमें हमारी वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन, उसके बाद मूविंग पोजीशन में इटरेशन होता रहेगा, जैसे ही हर सेकंड वो आगे बढ़ेगा तुरंत वेलोसिटी भी अपडेट है, पोजीशन भी अपडेट है, नेक्स्ट सेकंड फिर से वेलोसिटी अपडेट है, पोजीशन अपडेट है, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तक। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी अपडेट और पोजीशन अपडेट की जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं, VIT plus 1 shown on screen, VIT plus 1 W VIT plus C1 R1 P best minus XI plus C2 R2 P best minus, जो VIT plus 1 है क्या बता रहा है, वही सेकंड वाली जो मैं बात बता रहे थे, मिनी सेकंड्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट किस तरह से वेलोसिटी अपडेट होती है, दैट मींस अब हम सॉल्यूशन के कंस्ट्रेंट में जब बात करेंगे, दैट मींस की नेक्स्ट इटरेशन जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं, इटरेशन वाइज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, पिकार्ड्स मेथड है, अदर्स मेथड्स हैं, तो कैसे नेक्स्ट इटरेशन जो है हमें एक सॉल्यूशन देगी, उससे नेक्स्ट इटरेशन फिर सॉल्यूशन देता है और हम ऑप्टिमल तक पहुंचते हैं। तो इसमें यही कि VIT plus 1 और XIT plus 1 क्या बताएगा, उसकी पोजीशन। अब इसकी एप्लीकेशन एक बार मैटलैब में देखते हैं। ये मेरे पास एक ओरिजिनल कोस्ट मैट्रिक्स है, कल मैथमेटिका का वैसे यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, डॉक्टर ब्रजमोहन सर ने यहाँ पे दिया था। तो हम क्या करेंगे कि डिफाइन कर देंगे, ओरिजिनल कोस्ट मैट्रिक्स है ये, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे इनपुट हो सकता है, और उसके बाद ओरिजिनल कोस्ट मैट्रिक्स, उसके बाद सप्लाई और डिमांड, जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं वो है ये, सप्लाई और डिमांड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ बर्ड्स की जो हम बात कर रहे थे वो है 200। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इटरेशन 500 लिए हुए हैं। अब ये तो बिल्कुल भी मैनुअल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, दो कर लोगे मतलब इस पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन को आप 2 इटरेशन कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, मैनुअल कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो AI की यहां जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें कोडिंग की यहां जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इटरेशन। W मैक्स और W मिनिमम ये हमारा है जो वेट की जब हम बात करेंगे, वेलोसिटी और इनिशियलाइजेशन उनका। अब वेलोसिटी के वेट और इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है कि जब कोई बर्ड मूव कर रहा होगा या कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा, वो जरूरी नहीं है कि हर किसी का एक जैसा ही वेलोसिटी रहे, किसी की कैपेसिटी कम हो सकती है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, पोजीशन में भी डिफरेंस आएगा इसी तरह से। तो वहां पे वेट हमारा क्या हो जाएगा, आप अकॉर्डिंग टू दिस की 0.9 0.1 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद जो कॉन्स्टेंट थे उन्हीं के C1 और C2 जो प्रेजेंट थे, अभी मैंने इक्वेशन में दिखाया था, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली है। और इसके बाद ये पेनल्टी फैक्टर है, ये मैं बताऊंगा अभी एक बार सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद में। इसके बाद ये पूरा लूप यहाँ पे इसका जनरेट होता है कि सबसे पहले वेट के लिए, वेट में भी यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी ली गई है, मतलब कांस्टेंट भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रामिंग यहाँ पे करी हुई है, ये इसमें वेट में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जो 0.9 और 0.1 मैंने लिया हुआ था कि वो उसके बीच में वेरी कर ले सॉल्यूशन, क्योंकि अगर 0.5 फिक्स कर लिया फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 0.9 के बीच में वेट को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा लूप चलता है, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ते हो, कॉस्ट है, सप्लाई है और डिमांड है, उसके सॉल्यूशन देखते हैं कितने आते हैं बार बार। कितना दिखाई दे रहा है कॉस्ट नीचे, 253.3639। अगेन देखते हैं, टू 50.6073। अगेन 265.41। अब बढ़िया दिखाई दे रहा है ना,
वही प्रॉब्लम वही है, अलोकेशन ढूंढ रहा है वो। जो एक्सआईजे की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर रहा है। अगेन करते हैं, प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो जाएगी अब। और एक्चुअल में मैथमेटिका में भी पॉसिबल है, लेकिन मैटलैब बहुत आगे वेरी कर गया है मैथमेटिका से। और अब तो साथ में आ रहा है मैटलैब और पाइथन, दोनों साथ में जुड़ भी रहे हैं अब। ये देखो 254 पे आ गया फिर से, 254.0 ये। आप जितना इसको रन करते रहेंगे हम, तो ये एक सर्च स्पेस में, जो मैंने ऑब्जर्व करा था इसका, 247 48 टू 270 के आसपास इतने सर्च स्पेस में तुम्हें सॉल्यूशंस देता रहेगा। जितनी बार रन करोगे उतने सॉल्यूशन देगा। अब जो अब तक आप करते हुए आ रहे थे मैनुअल कैलकुलेशन, वो सारी खत्म कर दी कोडिंग ने। तो वो हमारी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, वो तो इसका उसकी तो कॉस्ट खैर ज्यादा आ रही थी, नॉर्थ वेस्ट की भी, लीस्ट कॉस्ट की भी, वो तो इस सॉल्यूशन स्पेस से बाहर ही हो गए। वैम था इसमें शायद 251 या 23 के आसपास उसकी आ रही थी, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। और ये तुम्हें और भी दे रहा है। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो सप्लाई और डिमांड, किसी सप्लाई से किसी डेस्टिनेशन पे जब जाएगा, जब किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमारा वो रास्ता ठीक ही हो। हम डिपेंड करते हैं कि वो जो नंबर ऑफ एलोकेशंस दिखे हुए हैं वो भी हमारे डिपेंडेबल हो। तो जब हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे, तो हम उन सोर्स और डेस्टिनेशन को अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसी सॉल्यूशन को। नॉर्थ वेस्ट वाले में क्या हुआ कि वो हमारा फिक्स हो गया कि भाई हमने इसको एलोकेशन दे दिया, वो रास्ता खराब है कुछ भी है, हमने उसको एलोकेशन दे दिया, तो हमें उसी पे ही जाना पड़ेगा। तो उसी उसी पे ही मतलब हमें जाना पड़ेगा। तो वो तो बिल्कुल उनका ड्रॉबैक हो गया ना, नॉर्थ वेस्ट का भी, लीस्ट कोस्ट का भी और वैम का भी। लेकिन अगर हम इसको रन करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास सर्च ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ गए और साथ में ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ गए। तो जब हम देखेंगे कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन हमारे बेस्ट है, हम उसको रख लेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजर, स्वार्म इंटेलिजेंस। और ये एआई के साथ साथ मतलब चल रहा है इसी चीज के लिए, क्योंकि आज हम जो एआई की बात कर रहे हैं, नहीं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि तुमने अलोकेशन, अब जब हमने उससे करा तो अलोकेशन फिक्स हो गया। अलोकेशन फिक्स होते ही फिर कोई ले जाने वाला है, ट्रक है या मतलब कुछ भी हमारे पास सोर्स से ले जाने वाला, या वहां के जाने वाला रास्ता है वो खराब हुआ, तो अब तुम फंस गए वहां पे। कॉस्ट बिल्कुल वो मतलब रियलिटी है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसमें। अब हमारे पास जब इतने सारे वाले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो हम देख लेंगे कि हाँ ये वाले हमारे लिए बेस्ट है, हम इसको लोकेशन चाहते ही नहीं है। और साथ में हमारे पास कॉस्ट भी आगे निकल के, कि अगर हम इस वाले को चूज करते हैं तो ये कॉस्ट हम ले सकते हैं। नाउ वन मोर एप्लीकेशन। एक तो मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एक बहुत आजकल यूज हो रहा है, और उसमें फ्लिपकार्ट हो, जो भी हमारे पास अमेजोन हो, ये जो कंपनियां हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हमारा जो यूज होता है। मल्टी मॉडल मीन्स कि एक कंट्री है इंडिया है, और हमारे पास कंट्रीज हैं, वो आपस में कोई हमारा प्रोडक्ट है, सपोज मोबाइल फोन है, तो उसको कैसे डिस्पैच हमें मतलब करना है, किन मोड से करना है। अगर हम प्लेन से कर रहे हैं, उसकी कुछ कैपेसिटी होगी,
थ्रू सी कर रहे हैं, उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ली हुई है, उनके कुछ एडिशनल कॉस्ट और यूज क्या किया है इसमें, मतलब ये एक नया वर्क था। पीएसओ का मैंने आपको अभी बताया। एक है सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम। सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि जो आयरन है एग्जाम्पल, हम उसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, वो क्या है, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो कहीं ना कहीं फिक्स होना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। दिस, कि जब हाई टेम्परेचर है, इनिशियल स्टेट है, पार्टिकल्स हैं, हाई टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ तो पार्टिकल्स ने क्या किया, मूव कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, और जैसे ही लो टेम्परेचर होगा पार्टिकल सेटल्ड हो जाएंगे। सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम। साथ में अभी मैंने पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन का बताया, उसमें क्या था कि पार्टिकल्स हैं और वो फूड सर्च कर रहे हैं विद वेलोसिटी एंड पोजीशन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि इन दोनों को कंबाइंड कर दिया है, पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम। कैसे किया कि पार्टिकल्स तो वही है, इनिशियल स्टेट हम बना रहे हैं, इनिशियल स्टेट जब हमने बनाई तो इसमें ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ सिमुलेटेड एनीलिंग काम करेगा, मतलब पहले हीट कर रहे हैं हम, हीट करने के बाद में फिर क्या किया, उसमें वेलोसिटी और पोजीशन को ले आई, वो किसकी थी, पीएसओ की। वेलोसिटी और पोजीशन को लाने के बाद में फिर हमने अपडेट कर दिया, चेकिंग अगर इसमें अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वेलोसिटी और पोजीशन होगी, और वेलोसिटी और पोजीशन को फिर हम ऑप्टिमल ले जाएंगे, वेलोसिटी और पोजीशन के साथ मूव करेगा, लो टेम्परेचर होगा फिर वो डाउन होगा। तो इन दोनों को मिला के एक HPAO एल्गोरिदम डेवलप किया है, और उसी एल्गोरिदम से हमने जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने बताया था वो प्रॉब्लम सोल्व की है। बोजल्स अप्रोक्सीमेशन या वेस्ट कॉर्नर लीस्ट कॉस्ट जो भी आप कर रहे हो, तो मान लिया अगर मैं इसके लिए टॉपोसिस यूज कर दूं इसकी जगह, तो मेरे रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। या मैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन अगर यूज करता हूं, मोंटी कार्लो सिमुलेशन लूं, मोंटी कार्लो सिमुलेशन को मॉडिफाई करूं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंट्यूनिस्टिक फजी सेट में, और तब मैं उसे ट्रांसपोर्टेशन पे लगाऊं। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिंपल ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना है। मान लिया अगर मेरे पास कहीं इस तरह का, जैसे पेपर जो है अभी साइक्लोन आया या दूसरा कोई इस तरह की नेचुरल आपदा आती है, वहां हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो जब मेरे पास पैरामीटर सारे चेंज हो जाएंगे, तो ड्राइवर को रिस्क भी है, रिस्क असेसमेंट भी मुझे देखना है, मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस भी चेक करना है। तो वो सारी चीजों में मैं अपने पैरामीटर्स को उस मेथड के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज करूं, और फिर मैं उन रिजल्ट्स को वैलिडेट करूं, तब आप इसका मतलब कुछ नया काम, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, पैरामीटर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करने हैं, और किस तरीके से आप उसे अप्लाई कर रहे हो ये आपको देखना है। तो जो आपने अब तक हो चुका, अगर आप उसी को अप्लाई करोगे तो कोई उसे कंसीडर नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा उसे। तो मेन ये कि या दूसरा आप कुछ टेक्निक्स, कुछ एल्गोरिथम या कुछ डेवलप कर पा रहे हो, कुछ कोड डेवलप कर पा रहे हो। अभी जब आप लोग देखोगे तो रिसर्च में एक नई चीज और आती है कि मान लिया आपने क्या किया, कोई आप प्रॉब्लम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में करते करते आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के लिए जैसे मान लिया मैटलैब है, अब मैटलैब में मान लिया मैं कोई कोड डेवलप कर दूं इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एक प्लेटफॉर्म है कोड ओशियन। कोड ओशियन में आप अपना जो कोड है उस कोड को आप लोग सबमिट कर सकते हो, वो कोड रिव्यू होगा,
और अगर वो कोड रिव्यू होने के बाद एक्सेप्ट होता तो यू विल गेट ए DOI फॉर दैट कोड एंड दैट कोड विल बी पब्लिश्ड इन कोड ओशियन। और फिर उसे क्या करते हैं वो लोग पेपर के ऊपर फ्लैग के रूप में लगा देते हैं। इसका मतलब एक ही अगर आप कोई इस तरह का वर्क करते हो तो एक ही वर्क आपको दो बेनिफिट देगा। उसके लिए दो DIO होंगे। DOI मींस जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर आप देखते हो, जो आपकी जो भी आपका आर्टिकल है उसे वो आइडेंटिफाई करते हैं उसके थ्रू हम लोग। तो वहां एक तो जो कोड आपने डेवलप किया उसके लिए आपको बेनिफिट मिला, और जिस कोड को आपने प्रॉब्लम में यूज किया उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरह की चीजें भी हमारे पास हैं कि मान लिया किसी की प्रोग्रामिंग है, किसी की कोडिंग में कोई इंटरेस्ट है और वो किसी प्रॉब्लम के लिए कोई अच्छा कोड लिख पाता है, तो दैट कोड विल आल्सो बी पब्लिश्ड बाय सबमिटिंग इन कोड ओशियन। कोड ओशियन एक प्लेटफॉर्म है, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें आप अपना कोड सबमिट करिए, वो रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद वो उसे देखते हैं कि उसके लिए फाइल आपसे सारी सबमिट कराते हैं कि जो कोड आप डेवलप कर रहे हो वो कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। दूसरा, प्रॉब्लम्स में किसी भी प्रॉब्लम पे जहां जिसके कंटेक्स्ट में आप देते हो क्या वो सब पे अप्लाई हो रहा है, वो आपको रन करने पे सोल्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा। तो एक ये जो कोड्स की हम जो बात करते हैं मैटलैब वगैरह में, तो मैथमेटिका में तो फंक्शंस मैटलैब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मैटलैब है इसमें आप कोड डेवलप करिए, कोड लिखिए, और कोड लिखने के बाद और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं स्टैटिस्टिकल बहुत, SPSS है, आर प्रोग्रामिंग है। अब जैसे मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो जब मशीन लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में आर प्रोग्रामिंग की भी बात करते हैं। तो वहां हमारे पास जैसे टैबू सर्च है, ब्लाइंड सर्च है, तो जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं उन सर्चिंग टेक्निक्स को हम वहां भी यूज कर सकते हैं, वहां भी हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं। तो वो एल्गोरिथम्स हैं, वो हम ये कहते हैं दैट इज कॉल्ड इज मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन। जो हम आजकल मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वहां बहुत सारी सर्च हैं, टैबू सर्च, ब्लाइंड सर्च और हिल हिल क्लाइंबिंग सर्च। जैसा आप कहते हो कि हिल पे चढ़ते हो, तो ये सारी की सारी जो नेचर जो चीजें ली गई हैं एल्गोरिथम, वो नेचर में ही एग्जिस्ट करती है। वहां से लेकर हम वहीं से उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स जो हमारे पास हैं, के थ्रू करके हम किस तरीके से नई चीजें बता पाते। तो मैं आपको लास्ट एक मतलब इसका कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम जो मैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। जी सर, कंक्लूड कर ले। ठीक है सर, ठीक है सर, 2 मिनट सर। ओके। तो जब पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन से सॉरी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को सोल्व किया तो इसके आउटपुट्स देखते हैं कैसे आ रहे हैं। एक कॉस्ट दी इसने $13,050 सबको, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका आउटपुट में। फिर इतना आया, फिर 152 तक भी चला गया, जा रहा है ना। उसके बाद फिर से रन करते हैं 13,041, 13,042, 13,072। यानी कि जो सर्च स्पेस है वो बड़ा है थोड़ा, कि 13,040 के आसपास आ रही है, 150 के आसपास भी जा रही है। अब जो मैं बता रहा था डेवलप्ड वाला जो करा है, उससे क्या बेनिफिट हुआ अब देखते हैं। 13,042, 13,041, 13,040, 13,042, 13,041, 13,043, 13,042। क्या फायदा हुआ कि ऑप्टिमिलिटी उसने और ज्यादा एनहांस कर दी। जो हम सर्च स्पेस की जो बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट हमारी आ रही है वो 13,042 के अराउंड आ रही है। तो ये इसका डेवलप जो मैंने बताया कि PSO विद ऐसे जब हमने कंबाइंड किया, इनकी कोडिंग को कंबाइंड किया, तो हमें ये, और दूसरा एक और बेनिफिट था कि जितना ये जो 13,042 की मैं बात कर रहा हूं, ये अराउंड PSO भी लेके आ सकता है और लेके आ रहा है। अगर हम उसके इटरेशन को बढ़ा देंगे, करते हैं एक बार इसके इटरेशन, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन 20 है, इसको 40 कर देते हैं। थर्टीन जीरो फोर्टी, 13,040, 13,040, यानी कि उसके अराउंड आ रहा है। और अब उस वाले में देखते हैं जो डेवलप्ड है, उस वाले में नंबर ऑफ इटरेशन हमारी कितनी है 20, यानी कि PSO की 40 इटरेशन लेनी पड़ रही है, और जो HPAO मैंने बताया कंबाइंड करके जो बताया उसकी 20 इटरेशन लेनी पड़ रही है। तो एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग हमारा कम हो गया, कि वो कम इटरेशन में ही उस ऑप्टिमिलिटी को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताया क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं खत्म कर रहा हूँ। बाकी आगे फायरफ्लाई एल्गोरिदम की भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, और सिमुलेटेड एनीलिंग का मैंने बता ही दिया, टैबू सर्च का सर ने अभी बात करी थी, जेनेटिक एल्गोरिदम है, ये सब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सारी है। क्योंकि हमारे पास जब सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको तो सोल्व करने के हमारे पास तरीके हैं जो टेक्स्ट बुक में आजकल ऑप्टिमाइजेशन बुक्स में चल रहे हैं। लेकिन जब हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है, प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स जब हमारे पास बढ़ जाते हैं, तब हमारे ये एल्गोरिदम्स काम करते हैं। क्योंकि हम सॉल्यूशन को अप्रोक्सीमेट ही फाइंड करते हैं, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी हम सीखते हैं, अप्रोक्सीमेट ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन का। थैंक यू सर। Yes, Tarun, your talk has been concluded. जी सर। Okay, so this is the time for the vote of thanks for this talk. Dear participants, on the behalf of the Department of Mathematics, I convey my sincere thanks to the speakers of this session. As you've seen in this talk is led by Professor Mukesh Kumar Sharma, and the key point and the key and the attractive point of this talk is that Dr. Sharma has presented various aspects of the fuzzy set theory, artificial intelligence, machine learning, and the connection between them. Participants, definitely you will be benefited from this talk, and you will start, or if you are in the research on this topic, then definitely you will benefit. And if you have any further query on this topic, then you can contact to Professor Mukesh Kumar Sharma, because he is the chairperson and head of the department in the Chaudhry Charan Singh University, Meerut. And in the second part of this talk, you have seen Mr. Tarun presented an application of the transportation problem by using the MATLAB and some evolutionary algorithms like the genetic algorithm, PSO algorithms, and he's shown in his talk what is the basic difference between the classical transportation problem and the modern transportation problem. And as you know that Mr. Tarun is a senior research fellow in the Department of the Mathematics, Chaudhry Charan Singh University, and he has published many research papers on this topic in highly reputed journals like Alexandria Engineering of the Mathematics, OpSearch, Applied Soft Computing. So, on the behalf of the Department of Mathematics, I again express my sincere thanks to both of you, and I'm inviting to all the participants who are presented in this talk in the physical mode for the tea. Thank you to all of you. थैंक यू सर। Okay.
Recording stopped.
आपल्याला कधी मला
Hello. Hi. Good morning, Professor Sandeep ji, if you are there. Yes, Dr. Sujit, you are getting my voice. Yes, yes, you are audible. Okay. Thank you very much for your presence in this workshop, and again, thanks for accepting our invitation. And I will start for your talk. Uh, Tarun, who is one for reading the CV? Tarun, anyone is present at there? It's okay if no one is there. I can introduce myself. No, sir. No. Please. Yes. Who is one there? Who is one? Recording in progress. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. Yes, please start. A very good morning to everyone. It's my pleasure to introduce the Professor Sujit Kumar Singh. Dr. Sujit Kumar Singh is an assistant professor at the Indian Statistical Institute and is posted at Institute Hyderabad Unit. Before joining ISI, he worked as assistant professor in operations and supply chain area and as a chairperson at Indian Institute of Management IIM Jammu. He completed his PhD in operations research from the IIT Roorkee and subsequently worked as a postdoctoral research fellow at the National Institute of Singapore for 3 years. Dr. Singh has worked on several optimization problems, including polynomial optimization, multi-objective optimization, fuzzy optimization, fractional programming, vehicle routing, transportation, and supply chain optimization. He has published several papers in reputed journals, including the International Journal of Production Research, Annals of Operations Research, Applied Mathematical Computing, International Journal of Fuzzy System, Soft Computing, etc. He has also written several research proposals on various topics such as incentive mechanism for plastic waste collection and recycling, multi-objective optimization for agriculture yield, multi-objective polynomial optimization, uncertainty modeling, incentivizing e-commerce delivery option, etc. Recently, Dr. Singh has been awarded the Indo-German Science and Technology Center Fellowship for the collaborative research in Germany. Thank you. Sir, you may start your presentation. Yeah, thank you so much. I just would request the host to allow me to share my screen. Okay, now it is allowed. Earlier it was not allowed. So thank you so much. All right. I Yes. believe my screen is visible. Yes, your screen is visible. Okay, all right. So thank you so much for a nice introduction. Uh, as already introduced, that I'm Sujit Singh and currently posted in Indian Statistical Institute, Hyderabad unit. And this unit is basically have only one department in this unit of ISI, that is SQC and OR, Statistical Quality Control and Operations Research. And in today's talk, I will be talking on multi-objective optimization with polynomials. So whenever we are going to talk about optimization, you might be aware, many of you might be aware that non-negativity plays a big role in optimization. However, when there is polynomials involved in the optimization problem, then checking the non-negativity of any polynomial is not so trivial. For example, you might see my screen. There is one polynomial given here, that is px x1 to the power 4 minus something. So this is a 4-degree polynomial in two variables. Now just three variables. Now just observing this polynomial, one easily can say that finding the nature of this polynomial, that if this polynomial is negative or non-negative or positive or what, is not trivial. In fact, it is not easy just to find out the non-negativity of this polynomial just by observing.
maybe after doing a lot of algebraic computation, one will be able to conclude that this polynomial has some specific nature of non-negativity, like positivity or whatever. But then it is not easy. That certainly I can say that checking the non-negativity of any polynomial is not certainly easy. And in fact, if the polynomial is of degree 4 or more than that, then that itself is an NP-hard problem. So that means identifying if any polynomial is non-negative or positive, that is an NP-hard problem if the polynomial has of degree at least 4 and in any number of variables. So just by observing, and even if mild computation will not be able to check the nature of this polynomial. However, you can see the second polynomial. If I will tell you that this former polynomial px can be expressed as another polynomial which is given by this later polynomial px, here you can see that this polynomial px is sum of a square of different polynomials. So you can see that this is one polynomial square, and this is other polynomial square, and this is other polynomial square. Now, just observing this polynomial, one easily can conclude that this polynomial is a non-negative polynomial. Why? Because this is sum of a square. So each term here is non-negative, and so the sum of the non-negative terms will be non-negative. So observing the second, the later polynomial, one can conclude that this polynomial is non-negative polynomial. However, observing the first polynomial, it is not easy to check if this is non-negative polynomial or not. So the concern is that if you will be able to express a polynomial into this structure, that means sum of a square of different polynomials, then one can easily conclude that polynomial will be non-negative. So such type of a structure of representation of a polynomial is called sum of a square polynomial. Sum of a square polynomial. That means representing a polynomial into a squares of sum of different polynomials. So then this type of representation is called sum of a squares of some polynomial. So a polynomial p will be sum of square if there are another polynomials q1 to qm such that p can be expressed as a sum of the squares of different polynomials q1 to qm, then this polynomial will be a non-negative polynomial, and that we can ensure because this is sum of the squares of polynomials, so it will be a non-negative polynomial. And a polynomial is called a positive semi-definite polynomial if it is non-negative. That means it is greater than or equal to 0 at all variables, then such type of polynomial is called a positive semi-definite polynomial. Equivalently, a positive semi-definite polynomial is defined by such type of a structure. That means if there exists some positive semi-definite symmetric matrix Q, and this P can be expressed as ZX transpose Q ZX, then such polynomial P is called a positive semi-definite polynomial where the matrix Q is a positive semi-definite symmetric matrix if such matrix Q exists. So in some situations, such matrix exists. For example, how to find such type of matrix? Let us suppose, for example, this is a small scale polynomial that px1, x2 in two variable. Then one can take this zx. Zx is basically a vector of monic polynomial. So where we can take zx like this, x1 square, x2 square, and x1, x2. And this q is given by such type of symmetric polynomials, q1 to this middle polynomial. And then here we have zx. So zx transpose q and zx. Then we need to find out the variable, this qij of this matrix, equating this to the original polynomial. That is by multiplication of this matrix expression, we will get right hand side like this, and then equating this right hand side to the left hand side coefficient of the polynomial, we will be able to find the value of this qij. And then if this qij is positive semi-definite matrix, I mean this forms a positive semi-definite matrix, then we will be able to tell that this polynomial p can be expressed as a sum of a square polynomial, and that expression will be something like that. Solving for qij will have a matrix q something like that. Further, decomposing this matrix q into L transpose L, where L will be something like that, then we find the sum of a square representation of the given polynomial. So the sum of square representation of the given polynomial will be something like that. This will be 1 by 2, and then the first matrix 2x1 square minus 3x2 square plus x1 x2 whole square. The second term will be the first component is 0. So the second term will have only x2 square component. That means the second z component, you can see the first z component here was x1 square, second z component was x2 square, and third z component was x1 x2. So in the matrix decomposition we got in the first row, all these are non-zero, and the first component has 2 multiplication, second will have -3, and third will have 1. So the first sum of a square component of the polynomial will be something like that. 2 first component x1 square minus 3 into second component plus
the third component x1, x2 whole square. And then the second term will be 0 for the x1 square, and then 1 time x2 square plus 3 times x1, x2 whole square. So this is how basically we find the sum of the square representation of any polynomial. So if the polynomial is non-negative, we can find sum of a square representation like this, and then we can ensure that this polynomial is a non-negative polynomial. However, the concern here is that each all non-negative polynomial can be expressed as a sum of a square polynomial. So that is a bigger concern basically. If all polynomials which are non-negative can be expressed into sum of a square or cannot. That is basically a famous problem posed by Hilbert in 1900 International Congress of Mathematics in Berlin. And this problem is called the Hilbert 17th problem. If a non-negative polynomial can be expressed as a sum of a square polynomial or not. That is basically the famous 17th problem of Hilbert posed in 1900. And that problem, that question was partly answered by Artin in 1927, and Artin proved that all non-negative polynomials are not sum of square polynomial. Only in some particular cases, if polynomial is non-negative, that can be expressed as a sum of square polynomial, and those cases were something like that. If a univariate polynomial is there, and if that polynomial is positive semi-definite, then that can be expressed as a sum of square polynomial. That is the one case. The second case is any quadratic polynomial. If non-negative, then will be sum of a square. And the third case is this biquadratic polynomial, that is a polynomial of 4 degree in 2 variables. And if that polynomial is non-negative, then that will be a sum of a square polynomial. So in these three cases, the question was partly answered by Artin in 1927, but in generic, there is no answer till now that which non-negative polynomial will be a sum of a square polynomial. However, later some researchers has given some counterexample, and they have shown that there are some polynomials which are non-negative, but those polynomials are not sum of a square polynomial. And the first such example was given by around 1970s, and the first example is this Moiskin polynomial. This Moiskin polynomial is a three variable 2 degree 6 degree polynomial, and this polynomial has been proved to be non-negative, but this polynomial is has been shown to be not a sum of a square polynomial. So that means we conclude finally that all non-negative polynomials are not sum of a square polynomials. But if it can be expressed as a sum of square polynomial, then we can ensure about its non-negativity. The next question is why non-negativity is so important. Another such example was given by this Ahmadi and Barillo in 2012. And this 8 degree polynomial, they have shown that this 8 degree polynomial, highly nonlinear polynomial it is, this polynomial is a non-negative polynomial. This polynomial is again not a sum of a square polynomial. And the very interesting thing is that just checking the non-negativity, it is not a sum of a square polynomial. Just checking this paper was published in a very reputed journal that is called Mathematical Programming, and that is basically the highest rated journal in mathematical optimization. So just checking that if this polynomial cannot be expressed as a sum of a square, and it took a lot of years basically just to check. So, and then this was published in 2012 in Mathematical Programming, and now one can basically see that how complicated one optimization problem can be if the polynomials are highly nonlinear. So just one can see, suppose your objectives are something like that, then how you will be able to check its convexity and how you will be able to ensure its optimality. Because any optimization problem, we can ensure about its optimality only if it is a convex optimization problem. For non-convex, there is no insurity about the existence of optimal solution and all. But then, just checking the non-negativity of such polynomial is too difficult, then how difficult will be checking the convexity of such polynomial? So basically, there is theorem posed by Murthy and all in 1985. They proved that the checking the non-negativity of a polynomial of greater than degree 4 is an NP-hard problem, and hence checking the convexity is also an NP-hard problem. The reason is that we check the convexity with the help of Hessian matrix. Now, if the polynomials are higher degree, the Hessian will be a higher degree polynomial. So the Hessian, the semi-definiteness of Hessian is checked by its principal minors. So if each order of principal minors are semi-definite, then we conclude that the Hessian is a positive semi-definite matrix, and then we conclude that the function is a convex function. But then checking the non-negativity of principal minors of those Hessians are basically NP-hard. And so checking the convexity of a polynomial of greater than degree 4 is NP-hard problem.
So basically, checking convexity is not easy if the polynomial is of higher degree. But when we are able to, but the checking this SOS representation of any polynomial is basically a semi-definite optimization, and a semi-definite optimization is a convex optimization, and that is a tractable optimization problem. So basically, checking the convexity of a polynomial directly is NP hard problem, but converting it into SOS sum of a square optimization and then solving it is a tractable optimization problem. So that's basically the efficiency of SOS representation, that we will not be able to check the convexity directly of a polynomial, but then converting it into sum of a square is a semi-definite optimization, and semi-definite optimization is a convex optimization. So that is tractable basically, because semi-definite optimization is a convex and convex optimization is tractable, and due to that, a lot of tools and techniques were developed for semi-definite optimization, and those are highly useful in learning techniques and machine learning techniques and everywhere, because those are very efficient. So semi-definite programming can be solved efficiently for any desired precision, and that was basically shown using interior methods by Perillo in 2003 itself. And they have shown that the semi-definite programming are very efficiently, and they also developed some tools like LMIP and SOS tools. So LMIP and SOS tools are basically those two tools. These are basically tools implemented in MATLAB to solve polynomial optimization problem. SOS tools basically convert a polynomial into sum of a square representation, and LMIP solve that converted semi-definite programming problem. And so a polynomial optimization efficiently can be solved once we be able to express into this problem into a sum of a square optimization problem. Later we'll see that any polynomial optimization can be expressed as a sum of a square optimization problem. If it is directly expressible, then fine. If it is not directly expressible, then we can approximate any polynomial into a very precise sum of a square polynomial. And so the semi-definite programming can be applicable here to solve polynomial optimization problem. So let us see something that what do we mean by a polynomial optimization problem. And then I will talk about a multi-objective polynomial optimization problem. So a general polynomial optimization problem is given by something like that: minimize some objective subject to some constant gix greater than equal to 0, I equal to 1 to m, where p, g1, g2, gm are polynomials in the ring of nth variable, that rx. Rx is basically the ring of nth variable. So here these are the polynomials. Then we form a new set that is denoted by something like that S between brackets G, and that basically consists of all those vectors in Rn where all these constraint polynomials are satisfied. That means all Gix are greater than equal to 0. Then such type of set is called a semi-algebraic set. Semi-algebraic set, that means a set which is formed by taking the intersection of multiple functions, I mean the domain of multiple functions. Then such type of set is basically called a semi-algebraic set. And hence, this problem is basically to minimize P over X in the semi-algebraic set G. So such type of optimization problem is called semi-algebraic optimization or semi-algebraic polynomial optimization. That means when all these functions involved here are polynomial, in that case it will be polynomial optimization. Otherwise, just we can say it like a semi-algebraic optimization problem. So here the problem is to minimize a polynomial subject to vectors which are in such type of semi-algebraic set. Then this further can be written like the polynomial optimization problem can further be written like this: minimize this function px, polynomial px, where x is in the semi-algebraic set, which is equivalent to find a parameter lambda, that is a max value of lambda, find a supremum of a parameter lambda, such that the polynomial p minus that parameter lambda is into this type of semi-algebraic set, that is PDSG, where PDSG basically represents all polynomials, non-negative polynomials up to degree d in this semi-algebraic set SG. So that means SG can have various degrees polynomial. So this PD basically represents all those non-negative polynomials in the semi-algebraic set of up to degree d. So that means if you can find some parameter lambda such that p minus lambda is in this semi-algebraic set, so that is equivalent optimization problem. That means to solve minimize px, we can solve maximize this lambda, where p minus lambda, if p itself is a sum of a square and semi-algebraic, then perfect. In that case, lambda will be 0. If p itself is not a semi-algebraic, that means non-negative polynomial, then we can have some max value of this lambda, so that the difference p minus lambda will be within this semi-algebraic set. Semi-algebraic set, that means a non-negative polynomial, because semi-algebraic set consists all the collection of non-negative polynomials.
So that will be something like that. Now we already know just from the beginning discussion that in non-negative polynomial, if it is sum, I mean, if any polynomial is sum of a square, then that necessarily will be a non-negative polynomial. So this problem, this semi-algebraic optimization problem, is further refined to another problem, and that is basically, sorry, yeah, that's further refined to another polynomial optimization problem, and that says that maximize this value, maximize the parameter lambda such that p minus lambda is in this set. So this set is basically not the semi-algebraic set, but this basically represents the set of sum of a square polynomials of up to degree d. And obviously, this set of sum of a square polynomials of up to degree d will be subset of this semi-algebraic set of polynomials of up to degree d. So that is a further sufficient condition to ensure the non-negativity. That means non-negativity of this polynomial p minus lambda. That means p minus lambda is a sum of a square polynomial, and hence p minus lambda is in the semi-algebraic set. So that basically ensures the conversion of this polynomial p into a sum of a square polynomial. And since finding sum of a square representation is a semi-definite optimization, which is a tractable optimization problem. This can be solved. This can be solved tractably. That means within some time limit, we will be able to find the solution of such type of optimization problem. And SOS tool basically gives the SOS decomposition easily, like the SOS tool in implemented in MATLAB, and that will basically gives the SOS representation of this p minus lambda polynomial, and then we can find the optimum value of lambda. So that's basically conversion of any polynomial optimization problem into a positive semi-definite optimization problem, and which is a tractable optimization problem that can be solved. Later, we have some other terminology like SOS matrix and SOS convex polynomial. So earlier we used to have the convex polynomial. Now we have SOS convex polynomial. So what we mean by SOS convex polynomial, let us see. So suppose X is a Rn vector and a symmetric polynomial matrix Px is given into this Rx m cross m. That means this is a polynomial matrix where each component of this matrix is a polynomial. Then this matrix will call a SOS matrix if this matrix polynomial P can be decomposed into this type of a structure. That means M transpose into M, where both of these decomposed matrices are polynomial matrices. Then such type of polynomial is called a SOS polynomial, because here each term of this polynomial will be a sum of a square term, because it is nothing but the product of M transpose and M. So each term will be a sum of a square term. So then such type of matrix is called is SOS matrix. And if Hessian of any polynomial is SOS matrix, then that polynomial is called a SOS convex polynomial. So instead of just checking the convexity of a polynomial, we will check the SOS convexity of a polynomial, and that basically ensures the convexity of the polynomial, because SOS convexity is more stronger condition than convexity itself. But checking SOS convexity is tractable than convexity itself, because checking convexity is an hard problem if the polynomial is of more than degree 4. But checking SOS convexity is tractable. So we will ensure that the Hessian matrix of the given polynomial, constant polynomial, is a sum of a square matrix. Then it will ensure the convexity of the polynomial. So that is basically the basic part of this work. And now we'll go to the multi-objective polynomial optimization problem. So in multi-objective polynomial optimization problem, we consider several polynomials to be optimized together. Several polynomials, that means at least more than two polynomials, then only it will be multi-objective, otherwise it is a single objective optimization. So we assume that it's a multi-objective optimization which must have more than two objectives, that means more than two objectives into the objective function itself, subject to some semi-algebraic set S, where S consists all these polynomials Gj greater than equal to 0. And here we have some assumption that if the convexity of these polynomials Pi and Gj are known, then perfect. If not known, then we assume that these polynomials can be expressed as a sum of square polynomials, because sum of square representation ensures the convexity. So if the polynomial itself are not convex, then these can be expressed as a sum of square polynomial. That is our assumption. The reason is that SOS convexity ensures the convexity, and so it is more sufficient condition, a stronger condition than convexity itself, but it is more tractable than convexity itself. So that is basically benefit also. It is more stronger with additional benefit of tractability. So to solve the type of, to solve a general multi-objective optimization problem, there are several methods, and most popularly the scalarization techniques. Scalarization techniques basically they combine several objectives together
and they convert the multi-objective problem into single objective optimization problem, and then they try to find out the solution, and then they try to connect the solution of the single objective to the multi-objective. So it's something like that. Thus, conversion into single objective optimization is called escalation techniques. So among them, there are various categories of escalation techniques, basically the priority category, posteriori category, and interactive methods. So there are 3-4 categories, mainly 3 categories: priority, posteriori, and interactive. So among those categories, some of the methods are weighting methods. So basically, my focus here is to focus only on those weighting methods, because we cannot consider all the methods together for analysis purpose. So we just focus here on the weighting methods. And among the weighting methods, these two methods are the most popular method. One is the weighted sum method, that is very elementary and a very old method, obvious, but still it is very popular. The second one is weighted goal programming. So in weighted sum method, what we do is that we combine all these polynomials together with some additional weights here, lambda k, and those weights basically represent the priority of factor of the objective. That means if suppose you have two polynomials to be optimized together, P1 and P2, and P1 is having high priority for you to be optimized, then we put high weight for P1. That means lambda 1, total lambda 1 can be 1 only. So let us say P1 is high priority, then we can put 0.9 for P1 and 0.1 for P2, something like that. And similarly, we do for the goal programming also. In goal programming, what we do is that for each objective, we assign some desired value, some goal to the objective function. Like for PK, we have some goal that is BK, and then we try to minimize this deviation. Deviation, that means suppose the objective is PK and the desired goal is BK. So if we are able to reach BK, or if we are not able to reach BK, then how far we are. And if we are far from BK, then it can be lower side also, it can be upper side also. And that is basically called the deviation, the upper deviation and the lower deviation. So we have these two types of deviations, the upper and lower. Obviously, only one will be non-zero at a time, because one objective either will be underachieved or overachieved, not both together. So only one will be non-zero here. And then we try to minimize the weighted sum of these deviations together. So here you can see, again, we have some types of weights of deviations. And here we have some types of weights of the objective itself. So both these type of escalation problem has some types of weighting according to the priority factor of the concerned objective polynomial or concerned objective function. But then these weighting methods have some issues, basically. And the most prominent issues are the non-convexity of the Pareto front and incommensurability. So what is non-convexity? Non-convexity of issues, that means if you are trying to solve the objective multi-objective problem using such type of methods, then what will happen that later the Pareto front, what we get, that Pareto front can be a convex shape or it can be a non-convex shape, any type at the end. But the issue with such type of method is that if the Pareto front is non-convex, then such methods may not yield those Pareto points which are lying on the non-convex part of the Pareto front. So only the convex part of the Pareto front, these methods are able to provide, but they will not be able to yield those particular solutions which are lying on the non-convex part of the Pareto front. So that's the non-convexity issue of all these weighting methods. And the second one is incommensurability. Incommensurability means that generally what happens, the multi-objective problems, the objectives are of conflicting natures. Conflicting natures in the sense, suppose you have 2 or 3 objectives together. Some objectives can have very big value. Some objectives can have very small value, like cost and efficiency. So cost can be in billion and millions, and efficiency can be hardly 0 to 1, something like that. Now, if you are combining these two objectives together, then whatever priority factors you are setting, for example, if P1 is cost and P2 is efficiency, so P1 can have very large value and efficiency can have very small value like 0 to 1. So if efficiency is your high priority, that means you're supposed to put high value for the efficiency and low value for the cost factor, and then combining these two using these weighting methods and then solving. The solution is basically biased towards the bigger objective. So that means even if you have high priority for the lower objective, the solution is biased towards the bigger objective. So that issue is called the incommensurability issue of this type of weighting method. And basically those issues are very prominent here, provided the objectives are conflicting in the sense that conflicting magnitude-wise. Magnitude-wise in the sense some objective is very small and some objective is very big. In that case, whatever priority factors you are putting, whatever weights you are putting, the solution will be biased towards the bigger objective, the giant objective. And that is the incommensurability issue. And that is obviously noted by, many more authors, not only I have noted.
So non-convexity and incommensurability, these two are the most issues. So to deal with these type of issues, again some normalization methods have been developed. And again, I'm focusing only on the weighting normalization methods. I told you because there are many more methods, so cannot cannot consider all the methods together to study. So to deal with these incommensurability and non-convexity of the Pareto front issues, the most robust method which was developed by this Chang and all in 2011, that is called multi-choice goal programming. So multi-choice goal programming, what they did is that they assign a goal to the objective function, and instead of assigning a fixed goal, they assign an interval of goal to individual objective function. So, for example, this is a goal, the desired value bk for the kth objective function, and then they have taken this interval for this bk. That means bk is lying within some interval, pk mean to pk max. So such type of intervals they have taken. That means they have given multiple choice to individual goals. So by doing this, they might overcome with the issues of underachievement and overachievement. Underachievement and overachievement in the sense that suppose some production centers have a capacity of producing of 100 unit at the end of the year, at the end of the production cycle. Because they have the capacity of 100 unit, they have target their goal as a 90 unit only. So because they have target their goal at 90 unit only, they took the advance order from their suppliers or their customers up to 90 orders only. But at the end of the cycle, they realized that a lot of a lot of raw materials has been surplus, has been left out. That means what happened? They were having the potential of high quantity production up to 100 unit, but they produced only 90 unit, and that's why some of the amount, some of the raw materials, some of the materials has been left out with them. So that means that goal was ill-defined, and so the goal has been underachieved, not a. Similarly, the other way it is true. Someone had a potential capacity of producing only 90 unit, but the goal target is 100 unit. That means that will be overachieve the capacity that can have overachievement, but the goal is ill targeted. So that means to deal with such type of ill-defined goals, they have proposed a multiple choice of the goals. That means instead of fixing the value of the goal bk, they have taken an interval of the goal like this. So bk is having multiple choice. That's why this problem is called this method is called multi-choice goal programming. And to deal with incommensurability issue, they divided the weighted objective problem with some factor rk here in such a manner that all objectives are having same type of scales. That means individual objectives are not conflicting now. So some objectives may not have too big value and some objectives may not have a very small value, but all objectives are scaled into similar type of measurement like 0 to 1 or something like that. And then this basically dealt with the incommensurability issue. So this is basically the most robust method which dealt with overachievement, underachievement, as well as incommensurability issues. So basically, we targeted this approach, and then we noted down several issues even in this approach, and there are some possible improvement in this approach also. Like these four, we have noted the upper bound here of unwanted deviation. You can see here, this unwanted deviation has some upper bound. That means this decay and all these have some upper bound. Here, you see this decay, the unwanted deviation are considered within this interval 0 to mk. That means mk is the upper bound of the deviation, and the same value they have taken as a pk max, this one also. That means they just took the upper value of the goal also like the deviation. Now the problem here is that when we are solving, the upper value of the deviation and goal both are same, so maybe at the optimal solution deviation value is coming bigger than the goal itself, and that's basically the contradiction here, because our target is to reduce the deviation, but the deviation cannot come more than the goal value itself, the optimal value itself. So there were several type of issues, even their methods. So we have noted down all those methods here, those issues, and then we propose something which can remove all these issues in the multi-choice goal programming problem. And so we propose a new oscillation technique, and then we call this oscillation technique like the gamma connective oscillation technique. So in this method, what we do is that we solve individual objective polynomials. So we find
all optimal solution for individual polynomials at a time. So that means if there are 2 or 3 or 4 polynomials objective, we find those 3, 4 optimal solution and we assign that particular optimal solution as individual goal, because there can be nothing a better goal than the optimal value itself, because that is basically the best goal. That is not a ill-defined goal, because one objective cannot achieve better than that particular optimal value, because that is individual optimal. So we assign individual optimal value at the goal of individual objectives, and then we define some upper upper tolerance level. So upper tolerance level is defined something like that mk, which mk is given to be 2 minus lambda k pko. Pko is the individual optimal value. So here you can see if lambda k is higher, here you can see if lambda k, that means the priority factor of that particular objective, kth objective is higher. For example, if lambda k is 1, then mk is nothing but pko, the optimal value of that objective, and that is the best value basically. So there is no deviation. The upper value and the optimal value both are same in that case. But generally it is not 1. So for example, if it is let's say 0.9, that means lambda k is higher, 0.9. Then mk will be mk will be 1.1 time of the optimal value. That means a little deviation is given upper side for the upper value. So the meaning here is that if some particular objective is having high priority, then that objective is being pushed towards the optimal value, because here the upper value is very closer to the optimum value, because if you have high value of lambda k, then mk is closer to pko. Pko is the optimal value. So the high priority objectives are being pushed towards the optimal value. A very little deviation is given to the high priority objective. So when we are solving at the end, the high priority objective cannot deviate much more from the optimal value. That means the high priority objective will have value near about its goal, and low priority objective can deviate a little bigger. For example, if lambda k is 0.1 only, then the upper value mk, you can see it can be 1.9 pko. That means it is far from the optimal value, the low priority objective. So this is how basically we fixed our priority here. Instead of giving this priority into the weighting factor, because weighting factor basically creates incommensurability issues. So instead of giving it into weighting factor, we just imposed our priority here in the upper value, so that the objective cannot move beyond that upper value. And then we define goal achievement function, something like that here, mk minus pkx by mk minus pk, where mk is the upper value, pko is the optimal value, and pkx, this one is that particular objective, that particular polynomial. So here you can see, if this polynomial value pk is tending towards pko, the optimal value, then achievement is 100%, going to be 1. The achievement is tending towards 1. And if it is pkx is going beyond from pk optimal value, then the achievement is reducing, something like that. So that means going towards optimal value, achievement value is increasing. Going beyond the optimal value, achievement value is decreasing, something like that. And high priority will have only lesser feasibility of deviation from the optimum value, because that upper value is very near to the optimum value in case of high priority objective. And this is achievement function we define. And then obviously when pk is convex, this achievement function is a convex concave function. And our target now is to combine all these achievement function and then maximize the average achievement, the total achievement basically. So maximizing a concave function, and that is again a standard optimization problem. When pk is a convex, this ak will be concave, and then we are supposed to combine all these achievement functions together and then solve that single objective optimization problem. So for combining, there was already this gamma technique what I proposed here. The earlier version of gamma technique was already proposed earlier, but then in the earlier gamma technique, the combined function was given something like this. You can see this product of all achievement function akx power 1 minus gamma into 1 minus product of all achievement function 1 minus the achievement function gamma, something like that. This was the earlier version of the gamma connective technique. Now the issue here is that you can see this power, product power 1 minus gamma, and again 1 minus product of 1 minus a power gamma. Basically these algebraic powers, transform the problem into a signomial optimization problem. And again, signomial optimization problem is an NP-Hart problem that was shown by Zhu et al. In 2014.
That is sigmoidal optimization problem is non-convex and NP-hard problem. So that means the conversion using this earlier gamma connective version basically gives a intractable problem later. So that is again unsolvable. Basically intractable, NP-hard and non-convex. So we cannot ensure about the existence of optimality. Neither it is easier to solve when we have this algebraic power here into the product and all. So basically, due to this intractability and anti-hardness of this accelerate problem, we proposed two new versions of gamma connective accelerate. And one we call that like the multiplicative gamma connective, and other is the additive gamma connective. So the multiplicative gamma connective is basically given by this. It is just a deviation of the original version. So what we did that instead of taking this one as a power, we have taken this one as a multiplicative factor here, and then this again gamma in the second term, and in between we have taken the addition. So this is a multiplicative because here in between this is a multiplicative term itself, and here also it is a multiplicative term itself. So we call it like multiplicative gamma splicing techniques. And but then here again you can see this AKX is a product of concave function, and we don't know the nature of the second term here. And product of concave function is also not concave always. Product of concave function is concave in some cases only. Some cases, that case I inform you later. Basically, that case is if all these concave functions are homogeneous polynomial of degree 1 only, that is the condition requirement, then only this product will be a concave function. That means the product of concave function is concave only in some case, not always. The product of concave function is a quasi-concave function always, but that will be concave only in some cases. But we are still not sure about the nature of the second term. So what we did is that we try to remove this second term from the objective function and to settle it down somewhere else. So what we did is that, So what we did is that, all right, fine. So that is the multiplicative, and the additive gamma function is basically instead of taking the addition here, we have taken, instead of multiplication here, we have taken the addition of all these achievement function, and the second term is as it is. The reason is that second term here was multiplication of 1 minus AKX. So now what we did is that our target is to maximize this combined achievement. So for that purpose, what we did, we put this mu as a minimum of the second term. That is mu is minimum of 1 minus product of 1 minus AK. Then further this gives something like that product 1 minus AK is less than 1 minus mu. And then we set we claim in lemma that the set S1, which consists all those X satisfying this relation, is a convex set. So that's what we claimed here, that this lemma is a convex. That means this set S1, which consists all those points satisfying this condition, what we obtained from the second term, is a convex set. And then instead of taking this second term into the objective itself, we have moved the second term into the constraint, and in addition, we proved that even adding this set into the constraint will not change the convexity of the feasible region, because intersection of convexity itself is a convex, and earlier one was already convex. And so adding this additional constraint in the constraint set will not change the convexity, because the resultant feasible region is still a convex set. That is another lemma we have shown. And then in the multiplicative acceleration will convert the problem into like this: 1 minus gamma multiplication of this all AK plus gamma time mu, where mu is the minimum of the second term, if you remember. And the new feasible region now is S1 bar, where S1 bar is the original one, intersection the second S1 lemma, what we just got, that considering this second term, we got this lemma. So that we have added into the constraint state, and then the objective was converted something like that: 1 minus gamma product of AK plus gamma time mu, subject to the X into the new constraint state. And then now, because this product is a quasi-concave function, and only in some cases it is concave, so it is a quasi-concave optimization problem. Because feasible region is already convex, only the problem is with objective. Objective is quasi-concave, so it is a quasi-convex optimization problem. And this also is solvable in most of the cases, basically. It is solvable into most of the cases. But because it is still not convex,
So we try to propose the additive gamma, and the additive gamma basically becomes something like the 1 minus gamma summation of all achievement function plus gamma mu, and X is in the new feasible region. And this is a perfect convex optimization problem because sum of concave function is a concave, so objective function is a concave, and the feasible region is a convex set. So this is a perfect convex optimization problem, and we can ensure about the existence of optimal solution of this convex optimization problem. And varying the priority factor lambda k in the achievement, we will get the complete Pareto front of the multi-objective optimization, and that basically we have shown that if X bar is an optimal solution of this 2.6 or 2.7, that will be the multiplicative escalation problem or the additive escalation problem, then that will be efficient solution for the multi-objective polynomial optimization problem. So that we have shown, and then further we define some performance factor. That performance, that means multi-objective can be solved using various methods. So how our method is basically performing, what is the performance or achievement factor of our method, that we define, and that is basically defined like closeness to the individual optimal solution. Individual optimal solution is called the ideal solution in case of multi-objective optimization. So whatever efficient solution we are getting using different methods, how closer those points are to the ideal solution. So basically, according to that closeness, we define our performance of the method. Basically, because that is the best goal, the ideal is the best goal. So if the Pareto fronts we are getting that is more closure, that is giving a smallest distance from the ideal solution, then that will be basically a better performance method, something like that. We define the performance, and then we have taken some numerical problems, like you can see, this is your first numerical optimization. This is the second one. You can see it's a highly nonlinear polynomial optimization problem. This one here we have 8-degree polynomial and 3 variable, that is highly nonlinear, and its convexity is not basically tractable, but because it was already shown by Ahmadi and Parillo that this is a convex polynomial. So this is the second, and this is the third polynomial we have taken here. This is still again a very highly nonlinear optimization problem. And then we solve these all using these 4 methods: the additive gamma method, the multiplicative gamma method, the weighted sum, and the weighted goal escalator. So here you can see the additive gamma method gives very, well-defined shape, and weighted sum is not giving well-defined shape. It is basically many things here you can see it's empty, it's not connected. So that means there are many points into the same weighting factor that dot points are not achievable using the weighting method. And the same thing here in the weighted goal, this is very deviating basically. And then this is the second numerical problem. You can see the second numerical problem. This is the solution with additive gamma. This is the solution with multiplicative gamma, weighted sum, and weighted goal. So here you can see the third figure. In third figure, 105 is the optimal value for the first objective, 0 is the for second objective, and 1.64 for the third objective. So here you can see first objective is the giant objective. That means higher magnitude objective is the first objective. And the solution is tending towards that first objective value. That means solution is biased towards that particular objective value, the bigger objective value in weighting method. That is basically incommensurability. And that is not the case in the additive gamma and multiplicative gamma. Here, the solution is working as per the priority factor assigned by the decision method. So this is the incommensurability. We can see that we have dealt with incommensurability. The another objective, third objective here. This is the solution by additive gamma. This is the solution by multiplicative. This is solution by weighted. This is solution by weighted goal. So here you can see the solution by weighted sum is this Pareto front, giving this Pareto front, which is a convex Pareto front. And solution by additive gamma, you can see, giving this, which is not a convex Pareto front, with the same weighting factors. So the meaning is that the weighted sum only gives the Pareto points which are lying on the convex part of the Pareto region. That means this region. That region is only produced by this weighted sum oscillation. But the Pareto front which are lying on the non-convex part, that means this region, those Pareto fronts are not achievable using the weighted sum methods and all those things. That means we are basically losing some potential Pareto points when we are solving using the weighted sum oscillation methods and weighted goal oscillation method. So that is basically the non-convexity issue. So we have dealt with non-convexity issue, that we can say we have dealt with incommensurability issue, and this is the achievement, the performance. So here you can see we have taken several points, the several Pareto points, and we have measured the performance
So the first, the red line, it might be visible to you. Here you can see the red line is highest among all these four lines. And that is the achievement basically achieved using the additive gamma method. And then the blue line is achieved using the multiplicative gamma method. And the rest we are the weighted sum and weighted goal method. So the additive gamma always gives a better performance also. And similarly, in the second problem also, this the highest one, the red one, that is basically the additive gamma, that is always higher than all other achievement indices. And in the third problem also, that is always higher than the other indices, that means other achievement indices. So that's basically we concluded that we are able to deal with incommensurability, with non-convexity of the Pareto friend. In addition, a good achievement, a better achievement than the other weighting methods. So that's what basically the conclusion of this presentation. That's it. Thank you. If any question is there, then I would be happy to take. Okay, all right. So I'm done. Thank you, sir. If anyone have queries, you may ask your queries. Yes, sir. Myself, H.N. Singh. Yeah, please. Sir, can we anticipate why additive performance is better? Yeah, I mean better in the sense that what happens that the initial issue, the non-convexity issues and the incommensurability issues in the weighted sum method, right? So weighted sum method basically is not able to provide you that particular solution which is lying on the non-convex part of the Pareto region. Right. So that is the non-convexity issue, the weighted sum method. And the later thing is that we define the goal as the individual optimum value, and then we try to be as closer as possible to the ideal solution in the additive method. So that means when we are closer to the ideal solution, obviously the achievement is higher. Right. And so the complete Additive is higher side. Right. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Okay. Welcome. If anyone has any queries, you may ask. Any queries from online participants? Okay, no queries. Okay, right. Thank you. Thank you so much to the organizing committee for this opportunity. I really have a nice day and nice talk today. Thank you, Professor Sujit. It was a nice talk, and the participants will surely be benefited from this SOS polynomial and the related theories which you have described in this talk. Right. I am very delighted to thank you for such a nice talk. Ashish, please all who will say word of thanks. Thank you, Professor Sujit Kumar Singh, for your engaging talk on multi-objective optimization with SOS polynomials. Your insights into the gamma connective scalarization method and its effectiveness in handling complex optimization problems were both enlightening and practical. We greatly appreciate your contribution and look forward to the impact of your innovative work. Thank you once again. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Doctor. Now I invite all the participants for a discussion, the topics which you want on discuss, your queries, and we will discuss. Dr. Sandeep. Dr. Sandeep. Yes, sir. I'm audible. Please ask the participant if anyone to discuss something. So you can see these things. You may go to the seminar room and discuss participants with their issues and on the topics, research topics which they want to work. Anything more? Okay. So, as we have discussed earlier today on the
various extensions of the fuzzy set theory. One more thing, Dr. Sandeep, you may Yes. also suggest some more topics, some more aspects Yes, yes, yes. of fuzzy logics of computing optimization control theory, Yes. and that can help the students in getting your problem solved and for getting new ideas so that they can also think in these areas also. Yes. Yes. So, in this discussion, we will discuss about the some aspects of the fuzzy set theory. As you know that fuzzy set theory is playing a very vital role in the present scenario for solving the complexities and uncertainties of the industrial and economic and presented in the society problems. And basically, we face two major issues during the fuzzy problems. One, how we fuse the problems, how we fuse the fuzzy information into the single one problem, right? So as we seen in the first lecture, for that purpose we can use the aggregations operators. So one major role of the aggregation operators is playing in the fuzzy set theory. So as you know that aggregation operator is it's a very important role in the decision making or fuzzy optimization problems. So when you are using the aggregation operators, so one anyone can use the one aggregation operator from the literature. Yes, so in that case, you can use the aggregation operator from the literature. Then you are not working on the aggregation operator. But when you are using the aggregation operator which you are going to develop, then first you will focus on the properties of the aggregation operators, because when we are developing an aggregation operator, then there is a basic need that the problems, the information which have been fused into the single one information, then there should no loss of the fuzzy information. If you are converting the many fuzzy information into the single one and you are losing something, you are losing some fuzzy information, then you cannot say your aggregation operator is good. So when you are using the aggregation operator in your optimization problems or in other problems, then first you will sure that your aggregation operators convey all the fuzzy information into the fused information, right? In the present scenario, many aggregation operators have been developed. But as you know that complexities and uncertainties in with various aspects are increasing in the present industrial problems. So there is a need of the some new aggregation operators which can deal all these uncertainties and complexities. One. Second, the second aspect of the fuzzy set theory is the how can you measure the how can you measure the fuzzy information. So for dealing such a measurement in the fuzzy set theory, you can use the
term score function, right? The score function and the accuracy functions. Both the functions can measure can measure your fuzzy information by using the comparison laws. But there is a problem when you are using the score function. One is that there may be created many situations when your score functions may be failed for measuring the fuzzy information. So there is again a questions. There is again a questions. How can we develop a good score function? One. Second, how can you avoid all these situations under which your score functions may be failed? Excuse me. Yes. Yes. Yes.
Yes, Ashish, you are getting my voice? Ashish? Yes, sir. Okay, you will start the session with the feedback of different scholars presented in this workshop. So first, you will handle and you will give the mic to the participant, and they will briefly give your feedback. How much you have learned in this workshop so far, and how much you have the benefited in this speeches and our speakers. So you will start, Ashish. Okay, sir. All the participants presented in this seminar hall, you have to share your views on this international workshop. So I am coming to one by one. So please share your reviews. Thank you. Hello. Hello, my name is Ume Farwa. I am a research scholar in the Department of Mathematics. दिस इज वेरी वंडरफुल वर्कशॉप। जैसे आज हमने सुबह से ही बहुत सारे, जैसे हमारा टॉपिक ऐसे इन्वेंटरी थ्योरी है, बट इस वर्कशॉप के थ्रू हमने, जैसे मुकेश सर ने फजी सेट, इंट्यूस्टिक फजी सेट, न्यूरल नेटवर्क, इनके बारे में बहुत बेसिक से बताया, तो उसमें हमें खुद भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी हुई कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपने उसमें देख सकते हैं कि कैसे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं। फजी का हमने बहुत की, सेट से कैसे फजी सेट आया, फजी सेट से इंट्यूस्टिक फजी सेट आया, तो इससे जो हमारी नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा मतलब इससे हम बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, मतलब हम अपने टॉपिक से हटके बहुत सारा चीजें सीख रहे हैं। तो ये जो वर्कशॉप है डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इस एरा में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का वो है, तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जब यहाँ से सीखेंगे तो आगे फर्दर इसको हमें, अगर हमें खुद एक्सप्लोर करना है तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तरुण ने भी बहुत अच्छा मैटलैब के थ्रू पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया, तो उससे हमें पता लगा कि कैसे बेसिक से, और मतलब हम बेसिक जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उससे हम एडवांस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वंडरफुल वर्कशॉप। I am really thankful to all the faculty members of the Department of Mathematics. Thank you so much. Thank you so much, Ume ma'am. And Vaishali ma'am. My name is Vaishali and I am a research scholar in Department of Mathematics, CCS University. जैसे उमे ने बताया, वाकई में ये वर्कशॉप बहुत अच्छी है, हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। आज मुकेश सर ने फजी के बारे में हमें बेसिक से बहुत कुछ बताया, और तरुण का लेक्चर भी काफी अच्छा था। और ऐसे ही हम एआई का अपनी रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं। एनजी में सब डिफरेंट फील्ड्स में कर रहे हैं। कोई ऑपरेशन रिसर्च की बहुत ब्रांच है, ऑपरेशन रिसर्च की कोई एक ब्रांच तो है नहीं, मल्टीपल। जैसे हम मल्टीपल इनकी जो हमने बात करी मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं।
रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, तो जिसमें कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या एस्पेक्ट्स हैं जो भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिन पर हम काम कर सकते हैं। तो अपने फील्ड में एरियाज आइडेंटिफाई करें, या हम अपने फील्ड में ये बताएं कि हमारे फील्ड में ये एडवांसमेंट हो रहे हैं, हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो फीडबैक उस टाइप का रिसर्च से संबंधित वाले, जिससे कि जो आने वाले लोग बैठे हैं उन लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, वो लोग ये सोच सकें कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। या हम ये दूसरा कि जो कोई ओआर में काम कर रहा है, ओआर के कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, कोई इन्वेंटरी में काम कर रहा है, कोई सप्लाई चेन में कर रहा है, मान लिया कोई जो ट्रांसपोर्टेशन वाला भी कहता है कि मैं भी सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उधर इन्वेंट्री वाले भी कह रहे हैं कि हम भी कार्बन एमिशन और ये सब ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और सब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो सब सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं। या हम इंटीग्रेशन किस चीज का, जो टेक्निक्स हैं, हम टेक्निक्स की बात की, हमने बहुत सारी टेक्निक्स की बात की है, तो उनका इंटीग्रेशन हम आपस में किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके सोचने की, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं हमारे लिए क्या आपका सोचने का तरीका, जो प्रॉब्लम्स के प्रति, मान लिया मेरा किसी प्रॉब्लम के लिए प्रति सोचने का तरीका कुछ है, आपका कुछ हो सकता है, तो उससे हमें क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस तरह की चीजों पर थोड़ा सा आप लोग डिस्कशन करें। क्योंकि ये जो अब आगे आने वाले 20 मिनट्स हैं बिफोर लंच, हमने डिस्कशन सेशन रखा, तो आपस में आप लोग बैठें और ये डिस्कशंस करें कि हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, क्या हमारा इंप्रूवमेंट्स हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पब्लिकेशंस की और इनकी स्थिति धीरे धीरे यूजीसी, सीएसआईआर या यूनिवर्सिटी सब एससीआई जर्नल्स पे की भी एससीआई पेपर होने चाहिए, 2 एससीआई पेपर होने चाहिए। उधर दूसरा क्या हो गया है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात, की कैसे प्रोजेक्ट लिखें, क्या करना, प्रोजेक्ट कैसे लिखना चाहिए, पीडीएफ वगैरह। मान लिया पीएचडी के बाद हमारे पास क्या टीचिंग ही विकल्प बचता है, अगर टीचिंग नहीं बच रहा है तो हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ कहाँ हम लोग पीडीएफ या वो उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो यू विल फाइंड, यू विल सी कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज वेयर यू कैन गो, you can do with a handsome scholarship you can get। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, केवल हमें क्या करना है, हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। वो एरियाज आइडेंटिफाई करके कि हम किस में कर रहे हैं, या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उन प्रॉब्लम्स में क्या टेक्निक या क्या मेथोडोलॉजी और उसमें इंसर्ट कर लें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम की डिमांडिंग, हमारी प्रॉब्लम को देखने का लोगों का तरीका वो बदल जाए। जो ये सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक्स हैं, या जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये केवल कंप्यूटर वालों के लिए नहीं है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए भी है, ये फिजिक्स वालों के लिए भी है, केमिस्ट्री वालों के लिए भी है। अभी जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एलॉय व्हील की हम बात करते हैं, अब एलॉय व्हील या हम व्हील बना रहे हैं तो उस व्हील में वहां भी मशीन लर्निंग हो रही है। हम एलॉय का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हम एक मेटल से दूसरे मेटल मिला रहे हैं, तो वहां भी मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों से आपस में डिस्कशन से ये चीजें निकल के आएंगी कि मैं अगर ये सब चीजें शुरू कर दूं करना, ये टेक्निक्स यूज करूं, तो मेरे उसकी डिमांड बढ़े, उसको पेपर की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। और अच्छा जर्नल किस तरह के पेपर लेते हैं, किस तरह के पेपर एक्सेप्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इस तरह का डिस्कशन आप लोग जो है आगे वाले 10-15 मिनट करें बिफोर लंच, उसके बाद लंच करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन जरूर करें। थैंक यू सर माई सेल्फ एचएन सिंह, एक प्रॉब्लम है। जी सर। हाँ सर, एक टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे पहले यदि हम सावन भादो को देखें तो एक कॉन्टिन्यूअस रेन होती थी। पता चला 2-2, 3-3 दिन तक जो है सनशाइन नहीं होता था और आराम से बारिश होती रहती थी। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो थोड़ा हायर टेम्परेचर है, तो समहाउ जो न्यूक्लिएट पार्टिकल्स हैं वो हायर जा करके कन्वर्ज से हो रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में रेन का पैटर्न जो है मोस्टली क्लाउड बर्स्ट के रूप में हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल्ली में भी अभी देखा जाए, इधर जहां भी बारिश हो रही है, वो सर हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देखिए कि इस टाइम पे किस तरह की बारिश हो रही है। हाँ, तो ये पैटर्न है।
और अगर मैं देखूं कि जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो उसी में एक कंप्यूटर का एक टॉपिक आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। राइट सर। रिकॉग्निशन की बात करता हूं तो अब हमारे पास जैसे हम बायोमेट्रिक करते हैं, हाँ या हम बायोमेट्रिक में अलग अलग टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूं कि फेस डिटेक्शन कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ तो हाँ ये कंप्यूटर की ब्रांच है और उस कंप्यूटर की ब्रांच के पीछे मैथमेटिक्स है। हाँ जी सर, अगर मैं क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करूंगा तो मुझे जैसे ए बनाना है, हाँ किसी ने तो एक इसी स्टाइल का बनाया, किसी ने दूसरे स्टाइल का बनाया। राइट वहां हमारा जो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है वो काम किस तरीके से करती है, उसकी जो मेथोडोलॉजीज हैं, हम लोग हाँ कहते हैं क्लस्टरिंग, एक वर्ड है क्लस्टरिंग। राइट सर और राइट इसी क्लस्टरिंग पे एक जर्नल का नाम भी है एल्सेवियर साइंसेज का, वो जर्नल का नाम भी क्लस्टरिंग है। हाँ तो क्लस्टरिंग क्या करते हैं, हम क्लस्टर्स बनाते हैं छोटे छोटे। राइट सर तो जैसे मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो मैं हाँ डेटा का क्लस्टर्स बना लूंगा। अब मैं राइट सर क्लस्टर में मेरे पास सपोज करो 100 टाइप्स की चीजें मैंने उस क्लस्टर में रख ली। तो राइट सर कोई भी व्यक्ति आता है, मान लिया उसका वो कहीं से चौक से टीचिंग करके आ रहा है, उसके हाथ चौक में रंगे हैं और हाँ उसकी बायोमेट्रिक करनी है, तो उसकी बायोमेट्रिक को ऐसा ना हो कि हमारे पास जो ओल्ड थ्योरी है कहती है कि या तो एग्जैक्ट मैच करेगा या नहीं करेगा। राइट लेकिन अगर हम इस तरीके से, जो हमारे पास एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग की, हम डेटा को ट्रेन करते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज टाइप से, तो जो राइट सर बायोमेट्रिक के लिए आएगा तो उसकी बायोमेट्रिक हो जाए। तो ये राइट सर की एडेप्टेबिलिटी, और जो हम कहते हैं कि डेटा सेल्फ लर्निंग, एक राइट एक एल्गोरिथम होती है SGAN। राइट सर तो ये SGAN का S फॉर सेल्फ, G फॉर जनरेटिव, A फॉर एड्रेसल और N फॉर नेटवर्क। राइट सर उसका काम ये है कि वो सेल्फ ट्रेन करता है डेटा को। तो अगर राइट डेटा कुछ आसपास भी आता है तो वो उस डेटा को ट्रेन कर लेगा, और डेटा को ट्रेन करने के बाद अपनी एडेप्टेबिलिटी इस टाइप से कर लेगा कि वो उसे एक्सेप्ट कर सके। राइट सर तो ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन, जो पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा। आप जो आपने बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, हाँ कि जो ये हमारा रैन हो रही है, जो हमारे पास क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग है, राइट इसी सर तरह अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करता हूँ तो सर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में जो हम रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन टाइप की जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, वो एल्गोरिथम मेरे लिए फोरकास्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट सर राइट सर तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि जो ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड एक हम बात करते हैं ट्रेंड की, राइट सर हम जनरली बोल देते हैं ये ट्रेंड चल रहा, हाँ लेकिन ट्रेंड को मैं मैथमेटिकली किस तरीके से इवेल्युएट करूं, किस करूँ तरीके राइट से एनालिसिस करूं, किस तरीके से राइट मॉडलिंग करूं। तो हाँ मतलब हमारे पास मैटर्स, मतलब चीजें अवेलेबल है। अब राइट सर मतलब ये है कि मुझे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको, जैसा हम कहते हैं ना, एक वर्ड होता है कस्टमाइज। राइट सर कस्टमाइज का मतलब यही है कि भाई मुझे जो यूजर है उस हाँ यूजर की नीड देखनी है, उस यूजर हाँ की नीड ये है, उस राइट यूजर सर के अकॉर्डिंग मुझे अपनी चीजें जो है उसी के फॉर्मेट में करके देनी है। हाँ क्योंकि कस्टमाइज सर कस्टमाइज हम यूज करते हैं। हाँ जी जी क्योंकि सर यदि क्लाउड बर्स्ट के रूप में होगा जी तो फिर ये छाता यूजलेस हो जाएगा। नहीं, सिंह सर कुछ हाँ सर मैं भी कहना चाहूँ थोड़ा सा। जी हाँ जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक जी यू जी सर, आपकी जो रेनिंग वाली बात थी ना, बारिश कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, थोड़ी सी मतलब मैथमेटिकली नहीं, थोड़ा सा लिटरेचर की बात कह रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपकी, सुन रहे हैं सब लोग। जी जी। तो सर एक लिटरेचर में बिल्कुल बात है कि हर कोई पर्सन जो है धरती पर, उसका फर्स्ट मोटिव यही होता है कि जीरो से हीरो हो जाए, या मैं यूं कहूं कि फर्श से अर्श पर चला जाए। तो जो पहले आपने कहा ना कि पहले कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले सावन राइट सर बहुत हाँ अच्छी बारिश हुआ करती थी, हाँ तो उसका रीजन और जो आज का रीजन है टेक्निकली, या फिर जो है मैथमेटिकली, जो सर ने बताया, मैं थोड़ा सा राइट सर लिटरेचर में बता रहा हूँ आपको हाँ कि पहले धरती बहुत खूबसूरत थी, राइट सर है ना, तो धरती खूबसूरत थी तो बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। अब हाँ धरती पर बहुत ज्यादा वेस्ट हर जगह फैला हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, तो बारिश भी कम हो रही है ना। और यही वजह से जो है ना, कुछ ऐसी ये लाइंस बन गई हैं कि आकाश में पहुंचकर धरती की शायद कशिश कम हो गई है कि बूंदे भी धरती की तरफ आ नहीं रही है। अदरवाइज आकाश पे पहुंच करके भला किसको जरूरत है वापस जमीन पे लौटने की? हाँ जी सर।
तो पहले धरती खूबसूरत थी, उसकी कशिश थी, इसी वजह से पानी आकाश में पहुंच करके फिर वापस जमीन पर लौटता था। अब थोड़ी सी स्मूथ फॉर्म में, यस सर। अब थोड़ी सी जो है ना, ये धरती पर जो हमने वेस्ट ज्यादा फैल गया है, या जो इंडस्ट्रियल्स का एरिया बहुत ज्यादा फैल गया है ना, इसी वजह से ये जो वाटर मैनेजमेंट है ना, एक तो वाटर मैनेजमेंट आपका धरती पर है, ऐसे ही वाटर मैनेजमेंट आपका स्काई में भी है, वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। राइट सर। वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। तो उस वाटर मैनेजमेंट को, जैसे हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो नॉन ऑर्गेनाइजेशंस कमेटीज हैं, वे धरती पर वाटर मैनेजमेंट पर बहुत फोकस कर रहे हैं, वैसे हमारे जो फोरकास्टिंग साइंटिस्ट हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो स्काई या स्पेस की रिसर्च में बहुत ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, वो इस पर भी फोकस कर रहे हैं। और आप जैसे देख भी रहे होंगे, एक एक टेक्निक सर ऐसी है जिसमें हम जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है सिल्वर आयोडाइड AgI AgI को इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जो आपके वाटर के पार्टिकल्स है वो कंडेंस हो जाते हैं ना, और फिर उसको हम किसी जो है प्रेशर, एयर प्रेशर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, और फिर जहाँ पर्टिकुलर जहाँ हमें बारिश करानी होती है वहां हम तो वाटर मैनेजमेंट केवल धरती पर ही नहीं, वाटर मैनेजमेंट हमें जो स्काई में है उसको भी देखना पड़ रहा है। जो आज ये हो रहा है ना, क्लाउड बस्ट, राइट सर, जो बादल फट रहे हैं, वो बादल फटने का भी यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वाटर मैनेजमेंट ऊपर ठीक नहीं हो पा रहा है। राइट सर। डॉक्टर संदीप, मैं मतलब कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा इसमें टॉपिक भी है, जो हमारी थीम है वर्कशॉप की, उसमें हम इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। जब हम इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ नेचर इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं। तो क्या हम कोई सी जो हमारे पास नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स हैं, चाहे जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें, स्वार्म की बात करें, फायरफ्लाई करें, बटरफ्लाई करें, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो देयर आर सो मेनी, ए लार्ज नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स वी हैव। कैन वी यूज एनी एल्गोरिथम आउट ऑफ दीज in the managing या in the optimization of such type of things? Exactly. सर स्काई जो वाटर मैनेजमेंट है, क्या हम उसको वर्ड दे सकते हैं कि मॉइस्चर हार्वेस्टिंग? लंच के समय में बच्चों को कृपया ना टोकें। मॉइस्चर हार्वेस्टिंग करके फ्रीली जहाँ भी कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी खा पी रहे हैं, सर दरअसल दो चीजें घूमने हैं। दें। जैसे लंच का समय उन्हीं के लिए सर्चिंग की हम बात करते हैं। सर्चिंग जो एक टेक्निक है, ये हमारा, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो कंप्यूटर में एक फील्ड होता है डेटा स्ट्रक्चर। राइट सर। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सॉर्टिंग की टेक्निक्स। सॉर्टिंग मींस कि जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मैं उसे सॉर्ट कैसे कर सकता हूं। तो सॉर्ट करने के लिए दो मेथड्स मेरे पास है, पुश एंड पॉप कंडीशन होती है। दूसरा, अगर मैं सर्चिंग की बात करूंगा तो मेरे पास, जब सर्चिंग की बात करता हूं, मैंने किसी पार्टिकल को सर्च करने की कोशिश करी, तो मेरे पास सर्च हो सकती है बहुत तरह की। जैसे लीनियर सर्च हो सकती है, लीनियर सर्च का मतलब एक लाइन चलते जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का मतलब मैं क्या करूंगा, बाइनरी फॉर्म में चलूंगा, आइदर 1 और 0 जो हम कहते हैं। अगर मेरे पास ये भी नहीं है तो फिर मेरे पास है ब्लाइंड सर्च। सर्च में मेरे पास बहुत सारी मेथोडोलॉजी है विच आई कैन यूज। अगर सर्च भी काम नहीं करती है तो फिर मेरे पास है हिल क्लाइंबिंग सर्च। जो हम इस तरह की मॉडलिंग करेंगे या इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च सच टाइप ऑफ पैरामीटर्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स that can be used in the formation of the model, and that can be used such type of thing. Right, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Any other query, question? Yeah. Good afternoon to all. Myself मोहम्मद मुर्तुजा। मेरा जो वर्क है इसमें PhD में, मेरा काम है MCDM टेक्निक को यूज करके साइट सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट, लाइक योर सोलर पावर प्लांट। ये देखिए कि जो ये काम कर रहे हैं मुर्तजा जी, तो अभी हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे। अब मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग में आजकल सोलर पैनल हम लोग लगाने लगे हैं। सर, तो पैसा भी ऑफिस में ज्यादातर लोग सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं।
तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोलर पैनल को कहाँ लगाया जाए कि हम उसका ऑप्टिमम यूज कर सकें। तो सोलर पैनल की साइट सिलेक्शन कैसे हो, सोलर पैनल कहाँ लगाएं, कहाँ वहां हमारी जो हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग की जो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उस मैथमेटिक्स को कैसे यूज हम करें, क्या टेक्निक्स लगाएं, तो उसके बारे में ये बताएंगे अभी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल। एक्चुअली अभी जो इशू आ रहा है, अभी इशू ये आ रहा है कि बहुत सारी टेक्निक है, एमसीडीएम, एएचपी, टॉपसिस, विकॉर, बहुत सारी हैं। हमें यह है कि हम मिनिमम टाइम में और मिनिमम एक्सपर्ट को यूज करके हाउ टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी आपने देखा जैसे अभी वॉर हो रहा है रसिया में, तो वहाँ के जो पावर प्लांट्स हैं, तो जो आपके कोल पावर प्लांट है या आपके हाइड्रो है, वो तो वो सारे खराब हो चुके हैं। तो हाउ टू रीबिल्ड द सोलर प्लांट और विंड एनर्जी विद मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम एक्सपर्ट्स, कि मिनिमम एक्सपर्ट को यूज करके और कोई ऐसी टेक्निक हम डिजाइन करें जिसमें हमें कम से कम टाइम में हमारा आउटपुट आ जाए और विद आपकी कंसल्टेंसी 0.1 से जिसमें कम हो। तो अभी इस पे हमारा काम है, काम सर के साथ है। वैसे मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल और मेरे जो सुपरवाइजर है वो मैथ्स से हैं और एक केमिकल से हैं। तो केमिकल वाले काम कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये व्यक्ति तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का, और एक सुपरवाइजर उसका केमिकल इंजीनियरिंग का है और एक सुपरवाइजर मैथमेटिक्स का और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सेंटर ऑफ एनर्जी वहाँ पे पीएचडी में एनआईटी जालंधर। अभी आप देखेंगे ना इसमें जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब चीजें चलेंगी। अभी एक लेक्चर होना है मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन इन एरोप्लेन ट्रेजेक्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एक मशीन लर्निंग का जो एप्लीकेशन डिफेंस सेक्टर में कहाँ कैसे हो रहा है उसके ऊपर भी एक लेक्चर है। 6G नेटवर्क्स के ऊपर भी एक लेक्चर है। और आज आ जाएंगे हमारे कल से 2 एक्सपर्ट, एक तो एनआईटी अगरतला से आ रहे हैं प्रोफेसर अबू कुमार साहा, और एक है एनआईटी दुरपुर वेस्ट बंगाल से प्रोफेसर समरजीत कर। तो आप लोग काफी मतलब अपनी क्वेरीज जो भी हैं 2 दिन वो कल आज आ जाएंगे, कल और परसों 2 दिन रहने वाले हैं। तो जो भी आपकी फजी की क्वेरीज हैं, जो भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स की हैं, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम की हैं, नेचुरल जो हम बात कर रहे हैं स्वाम इंटेलिजेंस इस टाइप की एल्गोरिथम, तो दोनों काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी क्वेरीज हैं, वो नोट डाउन कर लें और आराम से पूरे डिटेल में, क्योंकि 2 दिन वो लोग रहेंगे तो आप लोग डिटेल में उनसे क्लियर कर सकते। सर वन थिंग माई सेल्फ सर, मुर्तजा जी से एक रिक्वेस्ट थी हमारी कि अभी उन्होंने कहा कि मिनिमम टाइम और मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, तो ये एक्सपर्ट्स की रोजी रोटी क्यों खाना चाहते हैं? सर क्योंकि मिनिमम कॉस्ट करिए, मिनिमम स्पेस करिए, मिनिमम टाइम, लेकिन मिनिमम एक्सपर्ट नहीं करिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सर उनकी सैलरी तो आ रही है, जो एक्सपर्ट है उनकी सर सैलरी तो आ रही है रेगुलर, लेकिन जिन्हें लाइट नहीं मिल रही उन्हें लाइट तो मिल जाए टाइम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ आई इनवाइट Good afternoon, everyone. Myself Tushar Sharma, and okay. So I was working on a paper which is based on the blockchain-based authentication scheme for Internet of Vehicles, and while doing that stuff, I got into something related to medical field. तो जब मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ये सबके साथ होता हुआ कि हम सब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास अगर बुखार हो, हल्का नजला हो, कुछ भी थोड़ा बहुत जुकाम हो, तो डॉक्टर क्या दे देता है? सबसे पहली चीज आपको पैरासिटामोल दे देगा। अब डॉक्टर भी इस तरह से एक अंदाजा लगा रहा है उसने कि आपको देख के बता दिया कि आपको थोड़ा बहुत गर्मी या स्टार्टिंग है बुखार का, उसके साथ 1-2 मेडिसिन ड्रग्स और उसके साथ इंक्लूड कर देगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार वो मेडिसिन आपके साथ रिएक्शन कर जाए, आपका जो ब्लड ग्रुप है या जो भी आपका बॉडी टाइप है उसके साथ रिएक्शन कर जाए, तो क्या होगा? ऐसा भी होता है कि कभी कभार एक छोटी सी बीमारी बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। आजकल सबसे बेसिक चीज क्या है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ने के बाद हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसी उसकी लीनियंसी कर देते हैं अपनी हेल्थ के साथ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास चले गए या कोई भी अच्छा डॉक्टर के पास चले गए, उसने बता दिया आपको बुखार है, आप अपना
क्योर करते रहिए। लेकिन क्या होता है कि जब वो चीज बढ़ती जाती है और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे ही बढ़ जाती हैं। तो हम सबसे पहली बात की अब वैसे हम देखें तो डिग्रीज भी, अगर आके कोई भी डॉक्टर है, एमबीबीएस भी हो या फिर जो भी डिग्री लेके बैठा है, हम कैसे ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं कि वो डिग्री सही ही है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फेक भी चल रही है सारी चीजें। तो ऐसा ही एक हम लोग एआई मॉडल डेवलप करें कि वो आपकी जितने भी सिम्टम्स हैं या चीजों को देखकर आपको ये बता दे, वो भी जितना भी, जैसे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के बारे में सर ने बताया कि वो डेटा सेट पूरा कलेक्ट करके और बता दे कि किस तरह की बीमारी आपको है और आपको किस तरह की मेडिसिन आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से लेनी चाहिए। या फिर आपको ये बता कि आपको कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, आगे जाकर के कोई सीरियस इशू हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो आगे मतलब बढ़ती जा रही है और ये बहुत मतलब नीड ऑफ एन आर है इस टाइम पे। कि हम लोगों ने रिलेशंस की बात करी, रिलेशंस पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सभी लोग जानते हैं फंक्शंस वगैरह पर। तो जब हम इस, जैसा तुषार ने कहा कि क्या इस तरह के मॉडल्स हैं, इस तरह के मॉडल्स हैं। और आजकल जो रिसेंट मैंने पीछे भी जिक्र कर रहा था अभी रात में भी लेक्चर में, कि हमारे पास IOMT की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स की। हम IOHT की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ हेल्थ थिंग्स की। तो जो हमारे पास ये फजी जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास कुछ कंपोजिशनल रूल हैं। कंपोजिशनल रूल का मतलब ये है कि आपके पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया ये है कि भाई कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ पेशेंट आ गए, कुछ पेशेंट ने कहा पेशेंट और सिम्टम। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे हल्का बुखार है, उसने कहा कि मुझे खांसी है, उसने कहा मेरे हेडेक है। तो उसने कुछ सिम्टम्स बताए। तो मेरे पास P1 P2 P3 सपोज सम पेशेंट्स हैं और उनके कुछ सिम्टम्स हैं, S1 S2 S3 कुछ सिम्टम्स। एक तो ये बन गई आपके पास मैट्रिक्स। दूसरी फजी मैट्रिक्स मैंने बना दी कि कुछ सिम्टम्स है मेरे पास, अगर S1 S2 S3 ये सिम्टम्स हैं तो ये डिजीज हो सकती है। अगर उसने कहा मेरे पास ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, तो मैं कहता हूँ ये सिम्टम अगर ये होंगे तो ये डिजीज होगी, ये होगी तो ये होगी। और उस डिजीज की जो एफिशिएंसी या उस डिजीज की जो मतलब हम कहें कि जो उसकी वो होगी गंभीरता है जो भी होगी, उसे हमने ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग के लिए हमारे पास क्या है कि हम मेंबरशिप फंक्शंस बनाते हैं, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। कुछ मेथड तो डायरेक्ट मेथड्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड्स में हमने क्या किया कि हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं कई बार, तो उस पर हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स बना दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बनने के बाद मेरे पास क्या है कि मैं कंपोजिशनल रूल लगाऊं और कंपोजिशनल रूल लगा के इन दोनों मैट्रिक्स का एक फाइनल मैट्रिक्स निकालूं कि ये पेशेंट था, इस पेशेंट को ये डिजीज है। तो मैंने क्या करा, पेशेंट्स और सिम्टम देख लिए, सिम्टम और डिजीज देख ली, तो वहां से मैंने क्या निकाल लिया, पेशेंट और डिजीज पर आ गया मैं। तो मुझे ये पता लग गया कि ये पेशेंट था, इसको ये डिजीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू गिवन सिस्टम्स। अब नेक्स्ट उस पर क्या है कि डॉक्टर का रोल कहां से शुरू हो। अब डॉक्टर आ गया, डॉक्टर कहता है ये पेशेंट को ये दीजिए, तो मेडिसिन कैसे होगी। तो हमारे पास क्या है कि जब हम कुछ एक बात करते हैं, तो जैसा आपने कहा कंप्यूटर सीपीयू की मैं बात करूं, तो सीपीयू में आप कहते हो इनपुट आता, इनपुट के बाद कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर में होती है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, उसके कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, इनपुट आता, इनपुट के बाद आपके पास प्रोसेसर मेमोरी में जाएगा, कंट्रोल यूनिट होगी, और अर्थमेटिक लॉजिक मींस की लॉजिक काम करेगा वहां भी। वहां लॉजिक काम करता है 1 और 0 पे, और उसके बाद आउटपुट आ जाता। तो देयर आर 5 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। जब हम इधर आए फजी की तरफ या सॉफ्ट कंप्यूटिंग की तरफ या इधर की तरफ चले, जहां हमारे पास क्रिस्प चीजें नहीं है, तो हमने वहां बनाया एक फजी इन्फ्रेंस सिस्टम, या आई कैन ऑल्सो कॉल दैट फजी एक्सपर्ट सिस्टम। तो वी हैव फजी एक्सपर्ट सिस्टम कि आपने क्या किया, इनपुट्स ले लिए, उन इनपुट्स को फजीफाई कर लिया, उसके बाद उनका इन्फ्रेंसिस करना शुरू करा। इन्फ्रेंसिस मींस कहां से आया, आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने लॉजिक पढ़ते हो, आप लोग टोटोलॉजी बनाते हो, ट्रुथ टेबल बनाते हो, सारी चीजें करते हो। तो वहां एक चीज आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय। अब ये प्रीपोजिशन है, तो इसमें मतलब एक इसमें कुछ सब्जेक्ट होगा, कुछ प्रेडिकेट होगा। तो आपकी ब्यूटी ये देखिए कि कहाँ हम लिटरेचर में हैं, कहाँ हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, और कहाँ हम उसको फजी इन्फ्रेंस इंजन में यूज कर रहे हैं। तो वहां जब हम प्रीपोजिशन बनाते हैं, तो फजी में हमारे पास 3-4 तरह की प्रीपोजिशन होती हैं। एक तो मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया कि ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो ना मैं या ही इज ए बॉय,
अब ना तो मैं कोई कंडीशन लगा रहा हूं, ना मैं उस कंडीशन को क्वालिफाई करा पा रहा हूं। दूसरा मैंने कहा कंडीशन लगा दी कि इफ इट इज हॉट, अब हॉट आगे क्या है, कुछ नहीं मैंने कहा। तीसरा मैंने कहा कि इफ इट इज हॉट देन इट विल रेन, अगर आज गर्मी है तो बारिश होगी, ये मैंने कह दिया, इसमें भी मैंने। फिर मैंने लास्ट में मैंने कहा कि इफ इट इज हॉट देन इट विल रेन इज ट्रू। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कंडीशन भी कर दी, और कंडीशन लगाने के बाद यदि गर्मी है बारिश होगी, ये बात सही है, तो मैंने क्या करा, उसे क्वालिफाई करा दिया। अब मेरे पास क्या होगी, कंडीशनल और क्वालिफाइड फर्जी प्रीपोजिशन जब बन गई, तो मेरे पास क्या है कि इट इज हॉट, कुछ इनपुट है, रेन होगी, आउटपुट रेन की फॉर्म में मिलेगा, और मेरे पास क्वालिफायर क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्वालिफाई भी कर सकता है और डिस्क्वालिफाई भी कर सकता है। तो जब आप देखोगे कि आपके पास, तो आपने क्या करा, ये जो बनाने के बाद फिर आप इन्फ्रेंसेस कराओगे इस स्टेटमेंट को लगाने के बाद, तो आपके पास कुछ रूल्स बनेंगे। आपने जितने इनपुट लिए हैं, जितने आप चाहते हो, जितने क्राइटेरिया है, उन सबकी मल्टीप्लाई, जैसे आप कहते हो ना फंक्शन और रिलेशन, दो वर्ड पढ़े हैं आपने, ठीक है, एक होता है फंक्शन, एक होता है रिलेशन। तो मैं अगर कहूं एक सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो उसी तरीके से मेरे पास भी वहां नंबर ऑफ रिलेशंस मुझे बनाने हैं कि कितने रूल बनेंगे। अगर मेरे पास ये इनपुट और ये मैंने क्राइटेरिया ले लिया, तो हाउ मच रूल्स यू विल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम बाय यूजिंग दिस। तो हमारे पास क्या बनेगा, वो फजी इन्फ्रेंस इंजन बनेगा, और वो फजी इन्फ्रेंस इंजन इंटीग्रेट होगा किसके साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो दैट इज यूज्ड इन द मेडिकल डायग्नोस्टिक टुडे, कि मेरे पास क्या है कि मुझे अल्ट्रासाउंड करना है, मुझे एक्सरे करना है, तो जो इमेज प्रोसेसिंग की आप बात करते हो, जो इमेज एनहांसमेंट की बात करते हो, डॉक्टर दिखाता है, वहां लाइन आ जाएगी कि ये चीज एनहांस करनी है, यहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसमें एक्सरे करेगा, मान लिया एक्सरे, तो वो चीजें क्या करते हैं, इमेज एनहांसमेंट। तो पिक्सल वगैरह का हम यूज करते हैं, डिस्टेंस यूज करते हैं। डिस्टेंस आप अगर इसमें है तो जो आप कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, अगर यूक्लिडियन नहीं है, फजी की तरफ उधर जा रहे हो अनसर्टेन में, तो क्या करते हो, हेमिंग डिस्टेंस यूज करते हो आप। So these are the concepts which are being used today in various fields of diagnostic and so many things. Thank you. सर एक चीज, अच्छा कोई पूछ रहा है, ठीक। जी बोलिए। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अभी तक आप देखोगे कि एससीआई हब है, अगर आपके पास पेपर 2021 तक के हैं, लेटेस्ट पेपर नहीं है, मान लिया आपने कहा 2024 का है, तो 2024 का पेपर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2021-22 तक के, 21 तक के पेपर एससीआई हब पे हैं। उसके बाद अगर कोई पेपर नहीं मिलता तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो पेपर हमारे पास, क्योंकि इतने रिव्यूअर के लिए आते हैं, तो हर रिव्यू पे 30 दिन के लिए वो मिलता कि आप कितने पेपर एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास कम से कम 3, मतलब इतने हैं कि मैं कितने पेपर किसी भी जर्नल का डाउनलोड करूँ, जो है जैसे जिसके बहुत सारे जर्नल्स हैं, तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, मतलब यूज से मतलब देखना पढ़ना कुछ करना, वैसे यूज नहीं करना। हाँ, फिर एक्सेस है। नहीं, वो आप अपने कॉलेज के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू लिख के भेजो यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी अपनी इंस्टीट्यूशनल, या आपका कॉलेज है, जैसे कॉलेज है तो कॉलेज आपके, जैसे जहां भी आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी बनेगी आपकी। जैसे अगर ये मुर्तजा कर रहा, तो इसकी NIT murtaja@NIT जालंधर, NIT IITs में भी है, सभी यूनिवर्सिटीज में है। तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी क्या है कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी, जैसे मैंने एक पेपर सबमिट किया, तो मैं जाता तो अपनी पर्सनल आईडी, तो उसने मुझसे मांगा कि आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी देनी है तभी पेपर सबमिट होगा। तो वो बहुत से जर्नल्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी मांगते हैं, ज्यादातर जर्नल नहीं मांगते, वो मतलब कम है लेकिन ज्यादातर नहीं मांगते, ज्यादातर तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो वो आप कॉलेज की जहां आप कर रहे हो वहीं से बनेगी, वो आपका इंस्टीट्यूशन तो वो है ना जहां से आप कर रहे हो। ये तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है आपकी, मतलब अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी की परिधि में है, और अगर आप कहीं से कर रहे हो, तो जहां जिस इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो वहां की ईमेल आईडी चाहिए आप, जहां आप रजिस्टर्ड है। हाँ बोलो। अभी तक का लाइट के लिए हुआ नहीं है, लेकिन चल रही है, देखो क्या बनती है इसमें चीजें अभी, जो फर्दर रिसर्च, जो एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आएगा जरूर।
ये तो है ही, जैसे पंखा, पंखे के लिए रिमोट भी आ गया हमारे पास, हम रिमोट से पंखा चलाते हैं आजकल। तो पहले तो ये था कि भाई पंखे के लिए मतलब आप यहीं बैठे, यहीं से पंखा मैं दबाऊंगा और ऑन कर दूंगा, पंखा ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वो सारी चीज चल रही है। उसी से पंखा रिमोट से ही इसकी स्पीड वो हो जाती है। तो लाइट भी आती है, लाइट भी आती है, देखो बता रहे हैं आती है। ठीक है, सर थैंक टाइम सर टाइम हो तो एक चीज और डिस्कस कर लें। यू सर। सर हाँ सर, ऐसे इंटरफियरेंस से हम कैसे बचें कि मेरी तरह एक फिजिसिस्ट थे, उनका एक बंदर था, तो उनको कुछ रिसर्च सुनने समझ में आया तो उन्होंने जो है उसका एक टांग काट, हाथ काटा और कहा जंप, तो जंप कर गया। दूसरा काट दिया, जंप जंप कर गया। एक पैर काट दिया, जंप जंप कर गया। और दूसरा पैर भी काट दिया और वो कहने लगे कि जंप, तो जंप नहीं किया। तो उन्होंने कंक्लूजन लिखा कि एक बंदर के दोनों हाथ और पांव काट दिए जाए तो उसको सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे इंफियरेंस से कैसे हम बचें? यदि यही प्रपोजिशन हो जाए तो हम फंस जाएंगे। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में, प्योर स्टैटिस्टिक्स में घुसते चले जाएंगे, डीप में चले जाएंगे, यस सर। वहां हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ तो कहा इन्फ्रेंस की बात करी, INF ERENC, वहां INF RETIL, इन्फ्रेंशियल, एक इन्फ्रेंशियल वर्ड होता है। अच्छा अच्छा, डीप में चले जाएंगे तो वहां हम इन्फ्रेंशियल यूज करेंगे। अच्छा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you all. Now you are all welcome for lunch. And after taking lunch, we will meet at 2:25 p.m.